किशन हमने ली नहीं अभी तक, वो आओगे एग्जामिनेशन में चार एंड टैब आदित्य एंड टैब क्या है? ठीक है मैम, वो जो दो कार्ड ना कार्ड कार्ड ले आओ। हाँ जी, कहाँ जाना भैया? उधर मैडम बात मैम एक बार सामने दूसरा नाम से बात करो। क्या नाम बता रहे? किशन। Development and transformation of human talent. She believes that her erudite journey has done justice to her specialization. She has successfully hosted a number of training sessions, conferences, and workshops. She is a regular personality development, communication skills, stress management, motivation skilling, and entrepreneurship workshop trainer for personnel of the ordnance factories, the Department of Customs and Narcotics, bank employees, university corporates, and NABARD. She has also written a few textbooks and reference books. She has successfully guided many PhD students and has also assisted many students with their research projects. She has many papers published and presented in international journals and conferences indexed in Scopus and SSCI. Presently, she is working as a research head for AISECT Group of Universities, Bhopal, and is also heading two centers of 𝐄𝐦𝐻𝐨 Center for Social Entrepreneurship. Is in touch with us, ma'am. For the to take the session, over to ma'am. Ma'am, are we audible to you? Ma'am, if we are audible. Ma'am, we have sent you a request to unmute yourself.
Ma'am, we can see your presentation. However, your voice is not audible. Recording in progress. Hello, Rachna ma'am, are we audible? Hello.
अनम्यूट कर ओके शायद अब हो गया मैम है ना नाउ आई कैन नाउ यू सी मी आल्सो है ना मेरे ख्याल से यस माय कैमरा इज नाउ ओके है ना नाउ यू कैन सी मी ना ओके अब good morning, everyone. I'm so sorry. There was a serious technical glitch with the my joining, but so let us start the presentation. Good morning to all the esteemed authorities of the Mary College, Deepshika ma'am and Sarita ma'am. Today, the topic of my presentation is all about, if I hope you can see my presentation. Yes? I hope you can see my presentation. Madam, I can't hear you now. I hope, ma'am, can you hear me? Yes. Yeah, okay, I'm very audible.
Yeah. Today I was just listening to Dr. Kalra. I was thinking that we are talking about NEP, what we have to do and what we should do, and what is the role of universities or academicians to help in the NEP. Now, today I'll be showing you the approach which we have adopted a long time back regarding the NEP. Now, if you talk about the topic, that is 𝐼SECT, a practical approach to NEP 2020, 𝐼SECT is a group of institutions, that is All India Society for Electric Communication and Technology, where we have formed a group of 6 universities are there. We have 3 universities in Madhya Pradesh, and one is in Bihar, one is in Jharkhand, and one is in Chhattisgarh. So the aim of the group is to promote NEP. Now, how do we do that? So before going about the or talking about the practical aspects of how to move forward in NEP, let me talk about the things which we are exactly doing in this. Now, the inception of, if you're seeing, inception of NEP and 𝐼SECT group is way back. The 𝐼SECT group was formed in 1985, and from there onwards, we are taking, or we have adopted the NEP approach over there. And 𝐼SECT group was one group which way back in 1985 taught computers in Hindi language. Now, was something which was very revolutionary for the people, especially in the rural areas where Hindi was the main language as far as the communication was concerned. So we started teaching digital skills to the rural population in the Hindi language. That was the base of our group. Now, the basic philosophy of our group is to create a sustainable livelihood. This is what our Prime Minister is saying these days, that we need to create the sustainable livelihood. That is, it can be through startups, it can be through entrepreneurs, it can be through self-learning skills, it can be any kind of a learning a new skill set. So as long as we are going for a sustainable livelihood, that means we are not depending on anyone for our own earnings. That is sustainable livelihood. And the second, our approach was, or the philosophy was based on 3E model, that is education, empowerment, and enterprise. Education teach people what they really need. Just say Dr. Kalra said that we have to change the pedagogy, what we are teaching in the classrooms. This is what our main aim is. This is what we are doing. Educating, not teaching everything, but educating the students regarding the skill sets, how they can earn. Empowerment is earning. Financial empowerment, knowledge empowerment is important these days for the younger generation. And enterprises association of all these education and empowerment with the organization. So these 3 things were the 3E model of our philosophy. And the third was that, yes, majority of the schemes are applicable in urban areas. We have got more exposure as far as the rural population is concerned. But ultimately, we need to focus on empowering people at the grassroots level by improving their employability skills. For example, if you talk about farmers, they sow crop for say 3 months, twice or thrice a year, and rest of the time they're not doing anything for earning. So they are waiting for the crops, and after that they get their earnings. Now the question is the lean period, say 3 months or 4 months, where they are not doing anything. We need to empower them with certain kind of a skills where they can start earning in those lean time period also.
Similarly, if we talk about it in the about the students at the rural areas, we need to associate or we need to teach them some skill sets where they can, which is associated with their knowledge, basic knowledge, as well as with their earnings. So combining their basic knowledge with the livelihood is the main focus was of our organization. So the main vision was sustainable livelihood, approach was 3D model, and the focus was on the grassroots level of people so that we can have more skilled people at the grassroots level. Now, this was the target segment of our organization. It's a pan-India presence. So we are into major 100 cities and we have covered 610 districts, 6,000 blocks and 250,000 panchayats and 7 lakh villages we have covered till date. And the main areas where we are helping people is digital and skill divide parameters. Like people should be digitally aware and they should have certain kind of a skills where they can work on a digital platforms. Then technology integration, access to power, connectivity, availability of trained manpower, nature of demand. Now the problem was that if in this pyramid of digital skill divide, you will find the upper area is major 100 cities where there is a good power. Trained HR people are there, better connectivity of internet infrastructure is there, convergent technologies are there, and vertical ICT demands are there. Now, this is happening in the cities only. But what about the rural population? Now, rural population is suffering from poor power, unskilled labor force or HR is there, unreliable digital infrastructure is not at all good, then non-convergent technologies are there, horizontal ICT demands is there, like, and language and gender divide is a major problem in these rural areas. Now, this is where we come. We are not targeting the upper major cities, we are targeting the rural areas of India, and we are trying to change their lives through bridging this digital gap or through technology integration or connecting those people, whatever resources they have, connecting those resources with the livelihood. That is our main aim, so that they should not move out of their comfort zone and they should keep on earning the things also. That is the main aim. See, अगर हम किसी को अपने comfort zone से निकालते हैं तो end of the day we are not very adaptable to the change, and rural population or marginalized population is not at all accepting those changes. So we should do something which is within their comfort zone. So this is where the 𝐼𝐴𝐳𝐶 came. They started teaching everything in Hindi. So language barrier was bridged by us. Gender divide mein more promotion was given to females, more emphasis was there on the females, so that after 10th class, if they are learning any kind of a digital skill, then they can start earning. I am not saying that beautician ka course kar lijiye ya silai ka course kar lijiye. There are n number of courses which are there which can help the students. Like for example, everyone knows the Banaras sarees, and we have an office near Banaras where we जहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे 10th क्लास की लड़कियां थी, हम लोगों ने उन्हें अपने कोर्सेज में लिया एंड हमारे जो ट्रेनर्स थे, हमारे एकेडमिशियंस थे, दे वेंट ओवर देयर, उन्होंने वहां पे उन्हें ऑटोकैड सिखाया. अब उसके बाद उन्होंने क्या करा कि बनारस की साड़ी का जो डिजाइन होता है, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली, अगर आप मैनुअली उसे बनाते हैं तो इट टेक्स 3 months to 4 months to make that design, and then वो करधे पे जाता है, and after that the process of weaving starts. So approximately 8 to 9 months time लगता है कि आप एक बनारसी साड़ी डिजाइन कर पाते हैं. तो हमारे ट्रेनर्स ने क्या करा, उन 10th क्लास की गर्ल्स को ऑटोकैड सिखाया. उन लड़कियों ने
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स उन्होंने अपने जो साड़ियों के डिजाइन थे वो AutoCAD पे लेकर आई वो, एंड द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग वाज रिड्यूस्ड टू हार्डली 15 days to 1 month, एंड एज अ रिजल्ट करधे पे जब वो डिजाइन आया तो द प्रोसेस वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 9 months to 5 or 6 months. Now, this is what the sustainable livelihood is all about. When you are connecting the digital divide with the livelihood part. So this is what exactly we are doing at a ground level. There are n number of courses where I can quote where we are helping these people. So the problem statement where it started was that our model should reflect the demand side of the communities for various skills required in the unorganized sector. So हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करी. ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो एवरीथिंग वाज अवेलेबल, all the resources are available in the urban sector, everyone is getting a good education, but what about the unorganized sector? So we concentrated on the unorganized sector. And second was the sustainable model should not depend too heavily on government or donor support, but can survive on its own. So so the main aim was that the model, whatever we are telling them, whatever NEP says, we should develop a model which should be self-sustainable. It should not be something that which is government dependent or NGO dependent. We are not asking for any kind of a funds from the government or NGO. No. Even if we are able to train one single person on a self-sustainable model, then it's a big achievement for us. So this is how we should implement the NEP in our curriculum. That is the importance of NEP in our curriculum. That everyone should be self-sustainable. Everyone should earn their livelihood through its own. Now we developed an ISEC model where we were mainly talking about the skill-based and employability-linked training and capacity building programs for various stakeholders. Now, the one was training, to give a training in life skills, in communication skills, in digital skills, and other areas where the people were comfortable. Then project skills and development, then e-governance part, then financial inclusion, how to use the ATMs, how to do the digital the banking and everything, how to use the financial aspects of our day-to-day life through digital mode. Then all those online services, bill payments and everything. And last was universities and institutions, how our faculties are going to help these people. What is the contribution of our faculties in teaching all these things? See, everything comes back to the faculties or the trainers or the institutions. We have a very big responsibility towards the society in changing this mode of teaching, or we can say that our pedagogy, whatever we are teaching, should be changed according to the NEP. Then only we can talk about the sustainable livelihood part. Now, how did we do that? See, I am telling you about what ISET was doing in the past, say 37, 38 years. So this is how we moved ahead in the system, and this is how we helped the people. First was that we set up multi-purpose IT centers in the rural areas. With the help of our institution, with the help of our university, हम लोगों ने एक multi-purpose and flexible एक centers हमने rural areas में establish करे. So my suggestion was कि भाई, see, we are in a pan-India presence, but अगर हमें starting करनी है तो university system, what they can do is within their vicinity, they can set up a 1 or 2 centers, multi-purpose centers, where their faculties or trainers or administrators can help those people to run those multi-purpose centers. Once they become self-sustainable, then your help will not be required, and then you can move ahead to some other village or area. अभी उन्नत भारत अभियान में government has given us the 5 villages
to adopt. So we have those 5 villages with us. I hope Delhi maybe Mary College must be having that 5 villages जहाँ पे उन villages को हमें adopt करने के लिए बोला गया है. We can start with that Unnat Bharat villages, where we can open up these multi-purpose centers. Now, the nature of this multi-purpose center was very flexible. That activities such as training and skills development should be given to them. Information window should be there. Ki whatever we any kind of employment or rozgar mantra or any kind of a requirement you need or any kind of a help you need regarding the digital area, that center can help you out in that. It can be filling the forms also for JEE or NEET, or it can be filling the online application form for government jobs, or for applying for any kind of a help from government. All these things can be done in these centers. And then sale of allied products and services, menu-based approach is being adopted over here. Then forging developmental linkages, that is ongoing development programs in the areas of literacy, education, waste, watershed management, and health. Whatever government schemes are there, these centers can promote those government schemes and help those farmers or people or students in adopting those schemes or applying those schemes in that particular area. It can be done. And the third is adopting regional language. This is a very important point. Reason being, IT content should be developed. We have IT content in many languages, Hindi as well as other regional languages. But if you're opening a center in, say, area where Hindi is not a mother tongue or Hindi is not very popular, then regional language should be adopted so that people can be comfortable with you in taking all these facilities. Encouraging rural entrepreneurship through food processing industry or things which are related to agriculture, raw technology, or millets. These are the things which are very upcoming these days, and the rural population has got a lot of knowledge regarding these things. Only thing is we need to put that knowledge into the action. Then designing the, we have also designed the first IT Yatra, Pustak Yatra, and to create the IT awareness. These kind of workshops can also be organized by the academicians in their vicinity areas where we can promote the IT infrastructure. I remember one case, our team went to Jharkhand in the tribal area of Jharkhand, and there in one village, there was one boy. He was so happy to see the, the books of computer, and he was so happy to see the books also. And see, the people over there are not even exposed to कि computers होते क्या है या laptop क्या है या किताबें क्या होती हैं. At least हम awareness तो शुरू करें. Then only the demand will be generated. But let us start with the awareness first. Then enlisting schools and panchayats. Utilizing existing infrastructure is a very important aspect. Take the help of Sarpanch, take the help of school teachers who are in the rural areas to, encourage this kind of mission. Setting up of, yes, all the 6 universities are in tribal areas. Like C.V. Raman University is in a typical total tribal area of Bilaspur. Similar is the case with Jharkhand as well as in Bihar and Madhya Pradesh also. So targeting the rural as well as the tribal area is very important for the sustainable livelihood. This is how we will make an impact in the society. So if you talk about the verticals of ISECT, in that case,
We are into the ISEC livelihoods, skills and livelihoods through our e-services. We have a publication house where we are publishing 3,000 books approximately per year, and Government of India has also awarded us with the maximum number of books in India. Then insurance services are there, which is governed through those multi-purpose centers. Then we are into higher education, that is ISEC group of universities, 6 universities are there. Then we are into Vishwarang, that is Tagore International Literature and Art Festival. Every year we organize the Vishwarang, and on 25th only this year we have हम लोगों ने अपना फिनिश करा है इस साल का विश्वरंग, which was on the Hindi language, and approximately 50 plus countries from the world, they participated physically in the Vishwarang. And then we have ISIT group of industries which are into corporate social responsibilities, and we are doing the CSR projects also. Then we are having Get Set Parent for early childhood learning also. So if you see these are verticals, then you will find that we, from the day the kid is born, we are helping the kid up to the livelihood time where the person starts earning. So somewhere or the other, we are helping the child to have a holistic development. That is how we can talk about the sustainable development. So these are our few major highlights. We have a presence in 28 states. 100 plus live programs are running right now. We have a presence in 1,500 plus schools in India. Approximately, we are touching 150,000 plus beneficiaries annually. So you can very well imagine having 38 years of after 38 years of establishment, every year we are basically benefiting 1.5 lakh people. Then we have given employment to 80,000 plus candidates through our programs. And our main emphasis is on PWD or tribals or minority schools. So all those marginalized people, they are the main beneficiaries of our system. And we have an entrepreneurship program also where we are benefiting 10,000 plus candidates. Apart from this, if you talk about you must have heard Atal Incubation Center, AIC. That is Niti Aayog proposal, and two of the universities have received approximately 4 crores funding. 4 crores fund we have received to make the Atal Incubation Centers. Two of our universities have done that. And right now, those Atal Incubation Centers are helping 75 plus startups every year in different capacity to start their own businesses. So this is a kind of yeah. So now, if you see the Sustainable Development Goals, you must have heard that UNK, there are 17 Sustainable Development Goals. So exactly we are helping these 5 goals, like no poverty, quality education, gender equality, decent work and economic growth, and last is partnership for the goals. So as an academician or as a part of the university system, these are the 5 goals where as a professor or as an academician, we can help each other. This is what our organization is also doing. And this is how universities or institutions can help the people.
till date, if you say, we have opened 572 banking kiosks where we are helping the people in financial inclusion. Then 28 states may approximately 4,566 crore transactions has been done, and we have an association with 7 banks regarding this. And this is how the एक जिसे कहना चाहिए financially viability model is we are creating, where people are becoming more digitized. Then apart from that, 𝐼𝐧𝐚𝐾 Seva Kendra we have opened, that where we are doing the recharges, utility bills are being paid, then financial services and loan repayments are being done. Then ITR filing is a major problem. See, in urban areas or in cities, there are income tax lawyers who do it on their own for us, or we do it on our own. But what about the rural population? So they should be also be aware that yes, income tax needs to be filed. So our Seva Kendra, 𝐼𝐧𝐚𝐾 Seva Kendra are helping people to file those, even if it is a zero income tax. It doesn't make a difference as long as they are filing the ITR. So we are helping them to file the ITR also. Then online insurance, we are promoting health insurance as well as their crop insurance as well as the personal insurance for them, so that in case of medical emergency or something, at least they have an insurance for everything. Then, and with a minimum, we have a tie-up with government agencies where the payment for these insurances is very small. At least the rural people or the marginalized people are ready to pay. And they are in now, after this, they are into the mainstream. Their awareness level is seriously increasing after this. Then loan leads, how to take a loan. They should not go to the Bania or local loan lender of their rural villages, where the percentage of interest is very high. No, we are acting as a mediator between the banks as well as with the between the people, where we are providing these people, if they really want to have a loan to start up their business, then we are acting as a mediator, and we are filing, we are helping them in or with all the paperwork. Then Ayushman Bharat scheme is also we are promoting, so that they should be aware of what is happening. So अगर आप इंश्योरेंस की बात करते हैं, then life insurance, general insurance, health insurance, group insurance, and solution for the institutions. So these are our insurance parts. Then if you talk about the 𝐼𝐳𝐚 group of universities, then the one is in Rabindranath Tagore University, which is situated in Bhopal, Madhya Pradesh. Another one is in 𝐼𝐳𝐚 University, Hazaribagh, Jharkhand. Then we have C.V. Raman University in Bilaspur, Kota, Chhattisgarh. And then C.V. Raman University, Vaishali, Bihar. Scope Global Skill University in Bhopal. It is purely a skill university where only the courses of skill are being run. Then we have a C.V. Raman University in Khandwa, Madhya Pradesh. Now, out of these 6 universities, every university has certain skill set. Like if you talk about C.V. Raman University, Khandwa, then it is purely an agriculture-based university where we are talking about the food technology, agriculture. Then we are creating approximately, we have spent 10 crore rupees on creating genetic seeds of different variety of herbs as well as for different plants, where which are you can say कि लुप्त हो रही थी. So seed bank is being created by us for all the variety of plants, fruit plants and herbs in C.V. Raman University, Khandwa. Then if you talk about
scope global skill, then in that case it is a skill university. All kind of courses like PMKK, DDGQY, NRDC, all these Skill India, these are being taught to the students. Then Vaishali is CV Raman University. Vaishali is about the rare exotic birds and rare species का हमारा काम हो रहा है, animal husbandry का वहाँ पे. Then if you talk about the CVRU Bilaspur, then we are into document, हम लोग tribals के बारे में वहाँ पे बात कर रहे हैं, Gond tribe और छत्तीसगढ़ में जो बस्तर एरिया के ट्राइब्स हैं उनका, हम लोग उनके जितने भी कल्चर्स हैं, उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके फूड हैं, उनको हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं. एंड देन वी हैव अ हर्बल गार्डन आल्सो ओवर देयर, जहाँ पे हम लोग जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कन्वर्जन कर रहे हैं into usable eatable products. एंड वहां से ही हमारी एक स्टार्टअप शुरू हुई, दैट इज रमन ग्रीन्स, क्योंकि हमारा वो दैट एरिया, बिलासपुर एरिया इज वेरी फेमस फॉर मिलेट्स. वहां पे इंडिया की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कोदो मिलेट की होती है. तो हम लोगों ने वहां पे इनिशियली वी स्टार्टेड द concept in our rural technology department, and after that हम लोगों ने एक startup create करा रमन ग्रीन्स के नाम से, and now we are into millet processing of millets, and we are producing bakery products, cookies and everything millet based. and हम लोगों की अभी ये G20 जितनी भी summits हुई हैं वहां पे उनकी जो किट है उसके अंदर जितने भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे वहां पे हम लोगों ने अपने मिलेट के प्रोडक्ट्स उनको दिए, प्लस हमारे पीएमओ हाउस में भी मिलेट के प्रोडक्ट्स जाते हैं. तो you can very well imagine ki how the experiment which was started by CVRU Bilaspur in rural technology department was converted into a startup, and after that we started making these things in a commercial way. So initial मेरा कहना सिर्फ ये है कि हम अपने लैब्स में जो भी काम कर रहे हैं या जितनी भी यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में हम काम कर रहे हैं, इफ वी आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू अ स्टार्टअप्स और इनटू अ we are not taking it commercial, then it is of no use, because आपकी टेक्नोलॉजी, आपका प्रोसेसेस जो है वो वही लैब्स में ही रह के बंद हो जाते हैं. we have to move it towards, we have to move forward. वहां पे लैब में खत्म करना इज नॉट द सोल्यूशन. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो खत्म हो गए बिकॉज हम उसका एंड नहीं ले पा रहे. अल्टीमेटली दैट टेक्नोलॉजी और दैट प्रोसेस हैज टू बी कमर्शियलाइज्ड, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. मेक इट अ कमर्शियल. मेरा कहना यही है. जैसे अब हमारे खंडवा का है, इफ यू टॉक अबाउट खंडवा, आप लोगों ने नीति आयोग का प्रोग्राम सुना होगा, वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. Now, one aspirational district program says that every district has one food product जो उस एरिया में ग्रो होता है. तो खंडवा एरिया में अनियंस जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, वाइट अनियन, जिनकी हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं. हम लोगों ने व्हाट वी हैव डन इज हम लोगों ने सोलर मशीन्स लगाई हैं, एंड हम उन सोलर मशीन्स के थ्रू हम अनियंस को ड्राई करते हैं, एंड देन वी सेल इट टू द fast food industry. We procure the onions, white onions from the farmers, dry it, process it in our own startup, and then we sell it into the market to the fast food industry, where dry onion flakes are being used in soups, in Maggies, in restaurants, everywhere. So this is how we are channelizing. This is what NEP says. Channelize your everything into the commercial. अब इससे आप देखिए कितना sustainability हम create कर रहे हैं. We are procuring. Just 2 minutes. Excuse me, sir. Now this is how what we are doing is, see, we are creating the things for the farmers. हम लोग उनसे procure कर रहे हैं onion, तो we are paying certain amount of money to them. So they are assured with us कि yes, they'll get a right kind of a material for them, right kind of a money out of those things. Then we are converting it through solar energy. So the cost of processing is again very less. Again,
we are in a benefit. Now we are creating a supply chain to sell those flakes or onions to the market. Again we are earning money. जो हमने onion 2 rupees में हम लोगों ने procure करा, उसको हम 800 rupees kg पे उसके flakes या powder को market में फास्ट फूड इंडस्ट्री में सेल कर रहे हैं. सी अगर आप सारी कॉस्टिंग भी निकाल देते हैं, सब भी कर देते हैं, अल्टीमेटली वी आर इन अ प्रॉफिट. So this is how my suggestion is: identify one product and then convert it into a commercial thing. That is the main aim should be there. And imagine how many people are being employed in this total process. कोई सोलर एनर्जी मशीन्स के थ्रू प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई पैकेजिंग में आ गया है, someone is there who is helping out in procuring or creating a supply chain. All those things are being done. तो एम्प्लॉयमेंट भी है, सस्टेनेबिलिटी भी है, लाइवलीहुड भी है, and we are getting a profit also out of that, and we are providing whatever is required to the system. This is what NEP is saying every time. Then we have a platform called 𝐼𝐶𝐬𝐽 Learn, where we have our own learning platform. We are talking about the market-led on-demand courses. Then we have vocational skill courses, life skill courses, language trainings, placement and internship, vernacular language support. Everything is being provided on this 𝐼𝐶𝐬𝐽 Learn platform. Then 𝐼𝐶𝐬𝐽 publications, we have in-house team for developing content in hard copy as well as in e-learning format. हम अपना तो कर ही रहे हैं, whatever. जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं बहुत सारे उनका. अभी लेटेस्ट हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंटेशन करा है कि जो मथुरा के चतुर्वेदीज हैं, उनके एक सर्टेन ब्रिज भाषा में गाने गाए जाते हैं. We have documented those songs and then we have converted it into a book form and into a dance form also, and it is being distributed to the people. So ब्रिज भाषा जो आपकी अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेस नंबर ऑफ पीपल आर देयर जो इसको बोलते हैं. हमने उन चीजों का डॉक्यूमेंटेशन शुरू करा है. And we are into the Anuvad. We have an Anuvad Kendra or translation center also, where we are converting the international languages books into Hindi and English also. So everywhere there is a scope. The only thing is we need to identify the area where we can be good. So अगर आप बात करें एग्रीकल्चर की, एपरल्स की, ऑटोमेटिव, ब्यूटी, हम लोग हर तरह की किताब को ट्रांसलेट कर रहे हैं और नया कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, so that the layman can also understand what is happening, how the things are being done. Then we have a Rozgar Mantra also, where we are helping the people. We are creating a market between the industries, CI and everyone, and the people, and we are acting as a mediator between them to the students as well as to the candidates. Whosoever is registering at Rozgar Mantra, we are helping them out to finalize certain jobs. The thing is that कि आज की डेट में it is very difficult to get a good employee, and it is also equally difficult to get a good employer. Now we are acting as a mediator between getting a good employer and a good employee. So this platform helps the people in that. And then this is the few glimpses of Vishwarang. I'm sorry, मैंने slide change नहीं करी है, ये 21 की लगी हुई है. तो इसमें अब हमारे 22 का 23 की वो रह गई है मेरी. I'll help you out, कर लूंगी मैं अभी स्लाइड में. But these were the few figures which were there. Then we have our own website of Vishwarang, and जहाँ पे हम लोगों ने proper documentation करा है कि whosoever is coming to us and what kind of a thing they are talking about. जैसे we are into like everywhere. Like we have
called Ashutosh Rana also. Then we are talking about the Raghu Dikshit also. Then we are talking about the Rajat Kapoor also. Then Amish Tripathi also. Then Kumar Gandharv also. And then Malini Avasthi Padam Shri जो है वो जो folk songs करती हैं. तो आपको NEP says you need to be multi-directional and your aspect should be, it should not be concentrated on one area only. Like if you're talking earlier क्या था, engineering, management, यही सब था. फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी चीजें आई. The NEP says कि अगर आप courses run कर रहे हैं, then you need to be there for literature also. आप arts में भी होने चाहिए, आप mass communication में भी होने चाहिए. आपके पास Tagore, we have a drama school also, which is very unique in India. Then we are producing plays over there. तो engineering भी है हमारे पास. We have MBAs also. We have life sciences also. We have energy department also. So the question is कि ये सारी चीजें जो हैं ये सारी unique हैं, but when we are combining these things together, then in that case it brings out so much scope for research, for so much scope for NEP part. So NEP part definitely is being fulfilled when we are into all these things. So if you talk about the ISEC network, then we have a head office in Bhopal, national offices in Bhopal, zonal 8 hai, state level 14 hai, regional hai, districts hai. Then we have an international presence in Western Africa, Ghana, Ivory Coast, Kenya, and Nairobi, and Dubai. And we are expanding. Then as far as the recognitions are concerned, then our case study was published in Harvard Business Review by ISB. Then Silicon India has published a case study on our Chancellor, Shri Santosh Chaubey ji. Then we have received many awards and clothes from various organizations. Schwab Foundation is one of the very famous organization of which has given the Social Entrepreneurship Award to us. Then Dr. APJ Abdul Kalam, President of India, is also giving the India Innovation Award to our founder, Shri Santosh Chaubey ji. Then NASSCOM IT Award is there. Then Madhya Pradesh Gaurav Samman, Chhattisgarh Gaurav Samman, ICT penetration in rural area. So there are so many awards which we have received in the various areas. Some are in literature, some are in skills, some are in social entrepreneurships. So these are the international recognitions like Asia Responsible Enterprise Award, Taiwan, then Social Business Impact Award by European Union and UNDP, New York में था ये. So these are the few main awards. Then we have an association with the following ministries. And my suggestion to all the academicians who are sitting over there is that we should also go for this thing. Everyone should go for these associations. They are the ones who will help you out in NEP ultimately. That is Ministry of Skill Development, Ministry of Rural Development, Housing and Urban Poverty, New and Renewable Energy, Ministry of Defense, Ministry of Minority Affairs, Ministry of Information, Ministry of Human Resource, Niti Aayog, Textile, and Ministry of Social Justice and Empowerment. So these are the few associations and these are the few things which we, where the courses are being run in our universities only. Like leading programs and schemes which are being run by our universities is HSRL, NSDC का हमारे चल रहे हैं, DDGQAY के चल रहे हैं, then UNDP के courses हम लोगों ने tie up हैं, मिशन मंगलम की हम बात करते हैं. So these are the few associations हैं जिनके experiences हमारे यहाँ हमारे students gain करते हैं. So this is what the practical approach to ISEC. This is exactly what we are doing in NEP, and I would love to help anyone who is interested in talking to me. Anyone wants to ask a question, I am ready to answer that. Any questions?
questions from the audience, please? None? None, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. I am handing over the here. Handing you the Ma'am, can you please make us the host? yeah, how to do that? Okay, I'll just tell you. All participants kar दूं? No, ma'am. Ma'am, click on the Mary College, Mary College. Okay. and then make host. Just click on the Make host. Yeah. Thank you so much, ma'am. Okay. Chaliye. Thank you. Thank you. Okay, ma'am. Bye bye. Thank you so much. Thank you, ma'am, for an enlightening address. Your expertise and guidance have significantly enriched our understanding, providing a beacon for our collective journey towards educational empowerment. Thank you, ma'am, for taking us through a ISEC group of universities which is working and building skilled and empowered Saksham Bharat. With this, ladies and gentlemen, we reach to the middle of the session and we will break here for the high tea. I request all the dignitaries and the faculty members to proceed to room number 403 for high tea. Students are requested to stay in the seminar hall. Thank you so much. We shall reconvene in 20 minutes.
Recording stopped.
Recording in progress.
We welcome you, sir. May I now request Mr. 𝐤𝐻𝐻𝐾𝐚, sir, Assistant Professor MERICT, to present the sampling to Dr. Dalit Rahimas. Thank you so much, sir. I welcome you, sir, again. Over to you. तो
So very good afternoon, Prof. Session को मैं boring नहीं रखूंगा, ठीक है? I don't know that what is your background, how many people are from management background, how many people are from different backgrounds. I don't know the background, but I will try to make this session more interactive. ठीक है? मैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए नहीं, ये ज्ञान आप लोग अच्छे से करते होंगे, ज्ञान आप लोग यहाँ वहाँ से लेते हो, ठीक है? We'll try to make this session interesting and थोड़ा knowledge I would like to do. Specifically क्योंकि मेरे को context दिया गया है this NEP, which is new education policy. Okay, before I start my introduction in this context, simple question is why? This is very interesting. What is the need of this? Okay, हम कुछ नहीं थे तो already education policy चल रही है. We are far better. हम सभी उसी background से आए. I am from that background. So already education policy चल रही है. And you people are from that background. So already education policy चल रही है. Do you know आप कौन सी education policy में चल रही है? When it has been started. Amended in 1992. But prior to that, 1986 से पुरानी education policy. ऐसा तो नहीं है पॉलिसी एक दिन में बन जाएगी. It started its journey in the year 2014 to develop this policy. And ये कैसे develop हुआ, क्या हुआ? That is the basic crux. मैं थोड़ा यहाँ बताऊंगा आप लोगों से कैसे हुआ. But my basic question is why? Any answers? Why? क्यों इस पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? इस पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये पॉलिसी है क्या? दो ही बेसिक क्वेश्चन है मेरे. अगर ये आंसर आपके पास है या इसके बारे में कुछ भी आप लोग को पता है, प्लीज. एनीवन, चाहे स्टूडेंट बैठा है, फैकल्टी बैठा है, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फैकल्टी के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये सबके लिए है. एनईपी क्यों लाई गई? ठीक है, कोई स्पेसिफिक कारण आप लोगों के पास? कोई भी एक रीजन. वर्ल्ड बैंक से जो फाइनेंस लेते हैं हम, उसका भी एक हिस्सा होता है. हम पॉलिसी चेंज करते हैं. हाँ, वर्ल्ड नहीं, जैसे हमें फंड की जरूरत होती है तो उनकी कुछ बात फिर माननी नहीं पड़ती, उसमें ये पॉलिसी भी होती है.
थैंक यू। अभी आ रही है आवाज? इट्स फाइन, ओके, ठीक। सो सो वो टूट जाता है, ठीक है। जी आर वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि 5th तक सभी लोग जाते हैं, फिर क्या होता है, ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाता है। 8वीं तक कोई पढ़ता है, देन अप टू 10th some people, and very few people go to the higher education, then definitely up to the post graduation and research, very few people are there. Abhi aap logon ne recently you have seen Chandrayaan mission and other things. We require so many people at that profile also. There are so many scientists involved, theek hai, 10,000 20,000 scientists are involved for a particular missile only. आप कभी देखिएगा मिसाइल का यूट्यूब पे वीडियो आता है, यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, हाउ मेनी चिप्स आर एम्बेडेड इन दैट मिसाइल। ऐसा नहीं कि एक मिसाइल अपना रॉकेट जो दिवाली में जलाते हैं वो जला दिया, दैट इज अ मिसाइल, ठीक है। हाउ मेनी टेक्नोलॉजीज आर बीन एम्बेडेड देयर, सो वी रिक्वायर सो मेनी पीपल इन दैट प्रोफाइल आल्सो। तो फॉर दैट वी नीड दैट पीपल शुड गो टू द हायर एजुकेशन स्ट्रीम आल्सो, दे शुड लर्न समथिंग। तो दैट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट flaw which was there in the previous education policy, that people were dropping out because there was no interest. Second important thing, anyone here who is having his father engineering, जो engineer है या कोई doctor है? Anyone? किसी के father engineer है या doctor है? क्या है पापा प्रोवाइड? सिविल इंजीनियर, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज अ सिविल इंजीनियर, अगर उनका व्हीकल या घर पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या हमारा भी यूजुअली, ठीक है, वी आर सो मच एजुकेटेड, कुछ व्हीकल में दिक्कत हो जाती है, किसके पास जाते हैं हम लोग? तो हम तो जा सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के पास। मैकेनिकल इंजीनियर तो संभाल सकता है ना उसको, ही इज इंजीनियर। हम मैकेनिक के पास क्यों जा रहे हैं? मैकेनिक के पास क्यों जा रहे हैं? Cost is not a reason, because mechanical engineer don't know how to solve the problem, how to resolve the problem. He is not expert. हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ तोड़ ही के देगा उसको। हमें मैकेनिक अगर चाहे छोटा मोटा दुकान भी कहीं खोल के बैठा हो, we will find that okay ये कुछ कर दे। Second important thing, that talent, that skill was missing. That skill was missing. That vocation was missing. ठीक है। One more important thing, आज के टाइम पे जितने भी बच्चे स्कूल में जाते हैं, सी इतनी एक्टिविटीज कराते हैं, फालतू में इतना एक्टिविटीज कराते हैं, क्यों कराते हैं? पढ़ाई तो कराते नहीं है, एक्टिविटीज भी कराते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है, एक्टिविटीज ही करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो कहीं तो आगे इंटरेस्ट जा सकता है। हमने ये पढ़ाई को इतना वो बर्डन क्यों बना रखा है कि पढ़ना ही है? देयर मे बी n number of factors where he can go or she can go. Why? That was another important reason कि इस पॉलिसी का जरूरत हम लोगों को पड़ी। Now you see, I have just given some numbers here. ऐसा नहीं that this policy was been framed, एक ऐसे सेमिनार रूम में बैठे हम लोग 100 people and that policy has been framed. You can just see how many people were consulted before formulating this policy. ठीक है, तो ये पूरा इंडिया पिकअप किया गया, एक दो लोगों से पिकअप नहीं किया। एक चीज और भी आई, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव सीन दैट देयर वर सम यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन सिस्टम वेयर देयर वर पीपल जहां देश विरोधी बातें हो रही थी, देश विरोधी बातें हो रही थी, ठीक है। वी आर लिविंग इन आवर कंट्री और हम अपनी कंट्री को कोस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो दिख रही है। सो वेयर इज दैट नेशनलिज्म? ठीक है, दैट वाज वन ऑफ इंपॉर्टेंट रीजन। इसको भी देखा गया कि यार ये तो कहीं ना कहीं हमें कमी है, एंड टीचर्स आर आल्सो इन्वॉल्वड, स्टूडेंट्स तो है ही, टीचर्स भी इन्वॉल्वड है। तो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन कि इस पॉलिसी की हम लोगों को जरूरत पड़ रही है, ठीक है। सो कुछ ये
कुछ चीजें अगर मेरे माइंड में और आती रहेंगी आई विल अगेन डिस्कस. सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस जिसको पिकअप किया गया, थॉट आउट किया गया, देन दिस पॉलिसी वाज ड्राफ्टेड. नाउ इस ड्राफ्टिंग के लिए जैसे मैंने डिफरेंट ईयर्स लिखे, ये कुछ पिलर्स थे, इन पिलर्स की बेसिस पे इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया. ठीक है, कैन यू मूव द नेक्स्ट? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट रीजन, वर्किंग एज पॉपुलेशन. आप लोगों को पता है कंसेप्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन? वर्किंग एज पॉपुलेशन, यस. ठीक है, हमारा ये कहना है कि दैट अप टू आई थिंक 2045 इंडिया विल बी द यंगेस्ट पॉपुलेशन, यंगेस्ट लोग होंगे इंडिया के अंदर. इफ वी डोंट यूटिलाइज दिस मैन पावर, तो नेक्स्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन विल कम आफ्टर 30-40 years. सो 40 and 2080, अगर हम 40 तक अपने यूथ, अपने वर्कफोर्स को ढंग से एम्प्लॉयबल नहीं बना पाए, टैलेंटेड नहीं बना पाए, ठीक है, उनको स्किल क्वालिटी नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो टेन्योर है ये हाथ से निकल जाएगा. इसलिए दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वाज थॉट व्हाइल डेवलपिंग और व्हाइल फ्रेमिंग आउट दिस पॉलिसी. एसडीजी की बात इन्होंने कही, नेशनलिज्म की बात कही. एक सर्वे किया जाता है, उस सर्वे में देयर वाज अ सर्वे दैट वाज डन इन द ईयर 2018-19, जहां पे 4th, 5th, 6th क्लास के बच्चों को बोला गया जरा प्लस करो, प्लस 2 + 5 सिंपल सम्स दिए गए. और जब वो सर्वे कंडक्ट किया गया स्पेशली डिफरेंट स्कूल्स में, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड टू डू सिंपल प्लस. सिंपल प्लस, ठीक है. फिर कुछ जो सर्वेयर्स आए ना, उन्होंने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया, इस तरह से करो, ये करो. कुछ लोगों ने हिंदी में बोलना शुरू किया, आउटस्कर्ट्स में चले गए हिंदी में. तो बच्चे ना हिंदी समझ पा रहे थे ढंग से, ना इंग्लिश समझ पा रहे थे ढंग से, तो दे वर नॉट एबल टू आंसर. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जिसको लिटरेसी स्किल कहते हैं, लिटरेसी स्किल. सो लिटरेसी स्किल एंड न्यूमरेसी स्किल, ये दो अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सामने निकल के आई कि ये भी कहीं ना कहीं कमी है, ये भी कहीं ना कहीं इशू है, ठीक है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर है. और अच्छा, हमने किस मीडियम से पढ़ा? एनीवन? क्या बेटा, कौन सा मीडियम आपका? इंग्लिश मीडियम. एनीवन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड जिसने अलग ही मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा? संस्कृत कितने लोगों ने पढ़ी? संस्कृत, ग्रेट. बंगाली किसी ने? पंजाबी किसी ने? पंजाबी. इन पंजाब, यू आर फ्रॉम पंजाब, दिल्ली, स्टडी पंजाब. स्पेशली पंजाब में जब हम जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटीज में कोई भी कोर्स करते हैं ना, तो पंजाबी लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैंडेटरी सब्जेक्ट है. यू हैव टू गो फॉर दैट सब्जेक्ट, ठीक है. सर सेम ऐसा हुआ चाइना के अंदर. चाइना के अंदर कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश में नहीं पढ़ा जाता, कोई सब्जेक्ट इंग्लिश में नहीं पढ़ा जाता, कंप्लीट चाइनीज. तो क्या वही ठीक है? वही ठीक है क्या? We should learn other languages also. So language should not be a barrier for knowledge. It's not only about knowledge, the wisdom also. ज्ञान तो है लेकिन उसका कहीं यूजेज नहीं है, ठीक है. तो लैंग्वेज वाज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट. उर्दू है, कई लोग कहते हैं उर्दू कहाँ की भाषा है? कहाँ की भाषा उर्दू? हाँ, कश्मीर, पाकिस्तान, इंडिया, हाँ, टर्की, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट. उर्दू इज द भाषा ऑफ इंडिया, डेवलप्ड इन इंडिया, डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है. ड्राफ्टेड फ्रॉम अवर लिपि, देवनागरी, हिंदी, ठीक है. सब फ्रॉम पर्शियन, कुछ पारसी शब्द, कुछ संस्कृत शब्द एंड कुछ अरबिक शब्द उठा के उर्दू को ड्राफ्ट किया गया, ठीक है. हम कई बार ऐसे, आप जब बोलते रहोगे ना, कई ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे उर्दू में निकलते हैं, लेकिन हमें लगता है उर्दू नहीं बोलना चाहिए, ठीक है. एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं. आपको पता है क्रॉप जो बनते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, ठीक है. इफ समबडी इज फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, जो क्रॉप बनते हैं तो दो तरह की खेती होती है. कौन कौन सी? राबी और ये क्या शब्द है? ये क्या शब्द है? खरीफ एंड राबी, उर्दू शब्द है. कभी हमने सोचा? हम यही जनरली यूज करते हैं एंड वी थिंक यार ये तो
ठीक है. So language should not be the barrier for wisdom. That was the another important reason इस पॉलिसी को पिकअप किया गया. ये रवि मतलब सेंटर के शब्द है, इसलिए बोले जाते हैं, नहीं तो अपने तो सब सामने मतलब हर स्टेट अलग शब्द यूज करती है. बिल्कुल 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 करती है. ठीक है. तो मेरा बेसिक कंसर्न ये था कि दैट इफ समबडी वांट टू लर्न इन बंगाली, let him do. If somebody want to learn in Hindi, let him do. This was the background जिसकी वजह से इस पॉलिसी को पिकअप किया गया, ड्राफ्ट किया गया. I don't know whether it is interesting, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा नहीं लग रहा. ठीक है. But these were the reasons. NEP बार बार बोल रहे हैं हम लोग. ठीक है. तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस थी. नेक्स्ट प्लीज. दो तरह से डिस्कशन करूंगा. I have made only इसके बाद 2 स्लाइड्स हुआ. ठीक है. तो ज्यादा स्टोरी नहीं है, 2 स्लाइड्स और है. बिल्कुल ब्रीफ रहता हूं मैं. 2 जगह पे हम लोग इसकी इनकॉर्पोरेशन करते हैं. जब ये पॉलिसी बनाई गई, कितने लोगों से कंसल्ट किया, लैक्स ऑफ पीपल वर डिस्कस्ड. ठीक है. पंचायत में बात की गई, लोगों से बात की गई, इंटेलेक्चुअल से बात की गई, हर लेवल पे बात की गई. उसके बाद इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के बाद 2 लेवल पे इसका इनकॉर्पोरेशन किया गया, स्कूल लेवल एंड एट हायर एजुकेशन. नाउ स्कूल लेवल पे क्या चेंजेस की गई, ये कुछ यहाँ पे मैंने चेंजेस लिखे हैं. एनीवन कैन प्लीज रीड इट आउट. कोई भी प्लीज पढ़ ले क्विकली. एक पॉइंट्स या प्लीज. फाउंडेशन, उससे पहले कुछ लिखा है ना. ये पैटर्न क्या है? एनीवन हैव नॉलेज अबाउट CBMA? यस. अपने इंटीग्रेटेड कोर्स है. नहीं, अभी तो मैं वहां पे पहुंचा ही नहीं, हायर पे पहुंचा ही नहीं सर. अभी मैं स्कूल पे हूँ खाली. यस. ओके. एनीवन अदर प्लीज. यस. यस. नाइन टू 12. सो अभी इससे पहले क्या पैटर्न पे चल रहे थे हम लोग? कोई कहते थे क्या किया, 10+2. ये कहते हैं हम लोग 10+2 करनी है, +2 करनी है. उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं. +2 तो कम से कम करनी है. +2 करनी है. कॉमर्स पकड़ेंगे, अदर विल डू फॉर कॉमर्स. या यूजुअली हम लोग 10th के बाद कॉमर्स पकड़ना है. ये होता था ना. 10th के बाद क्या करेगा, या तूने क्या पकड़ लिया, साइंस पकड़ा, चल मैं भी साइंस पकड़ लेता हूँ. या तूने क्या पकड़ा, आर्ट्स पकड़ी, मैं पकड़ लेता हूँ. अच्छा, यूजुअली अनदर डिस्कशन, परसेंटेज कितनी है, 50% है. इसको तो आर्ट्स ही लेना चाहिए. कितनी परसेंट है, 60. कॉमर्स ले ले, कोई बात नहीं. ठीक है. 80% साइंस ही लेना, चाहे उसको आए कुछ या ना आए, लेकिन साइंस ही लेना. यूजुअली दिस वाज द कंसेप्ट आफ्टर 10th. 10+2 भी हम लोग करते थे, तो किससे करते थे, कॉमर्स, आर्ट्स. इस कंसेप्ट को खत्म करना. देयर विल बी नो आर्ट्स, नो कॉमर्स, नो साइंस. ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है. ठीक है. तभी मैं पहले बिगिनिंग से शुरू करता हूँ. सो कंसेप्ट क्या है, 10+2 पहले होता था, अब 5 ईयर. हम लोग पढ़ाई कहाँ शुरू करते थे, फर्स्ट में. ऐसे करते थे. आजकल हम लोग बच्चों को छोड़ते हैं, प्री स्कूलिंग में भी छोड़ते हैं हम लोग. प्ले वे जहाँ पे बोलते हैं, प्ले वे में छोड़ते हैं बच्चों को. क्यों छोड़ते हैं, अरे हमारे से तो थोड़ा सा 10 मिनट आराम मिलेगा, 1 घंटा 2 घंटा वहाँ खेलेगा तो हम थोड़ा सा शांत हो जाएंगे. ठीक है. चाहते यही है. और बच्चा भी क्या चाहता है, क्यों पढ़ाई, खेलना चाहता है बच्चा. लेट हिम प्ले. दैट्स व्हाई 5 इयर्स दिए गए. 3 साल में बच्चे को आप छोड़ो प्ले वे में और स्कूल में छोड़ो, और 5 साल तक उसको कोई होमवर्क नहीं देना. 0 होमवर्क, 0 एग्जाम. लेट हिम प्ले. जो करना चाहता है करने दो, खेलना चाहता है खेलने दो, मिट्टी से कपड़े भरना चाहता है भरने दो. 5 साल तक. ठीक है. उसको कुछ कोई काम नहीं देना और ना कोई एग्जाम लेना उससे. सो दैट मीन्स अपने 3 साल प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड. जब सेकेंड तक वो पहुंचेगा, उसके बाद जब वो जाएगा थर्ड में, थर्ड फोर्थ मैंने भी बोला, ये यहाँ पे हम लोग स्लाइड अब एग्जाम पैटर्न शुरू करेंगे. उसके बाद एग्जाम पैटर्न शुरू करेंगे. ठीक है. यहाँ पे उसको हिंदी में पढ़ाना शुरू कर देंगे. यहाँ पे उसको अपनी उसकी भाषा में पढ़ाना शुरू कर देते हैं. बेसिक लैंग्वेज, मान लो किसी की पंजाबी लैंग्वेज है तो लेट हिम रीड इन पंजाबी. कंपल्सन नहीं है कि पंजाबी में ही पढ़ाना है. इट्स अप टू यू whether you want to go for a Punjabi, you want to go for a English, it's up to you. But 3 language concept. ठीक है. इंग्लिश, हिंदी एंड अदर थिंग, और हिंदी एंड अदर थिंग. जो भी आपको लग रहा है, आप इनमें से कोई भी पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं. यहाँ पे कहाँ पहुंचे हम लोग,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन 6, 7। अच्छा, ये जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है इनको प्रेपरेटरी लेवल कहते हैं। इसी प्रेपरेटरी लेवल में जो मैं आपसे कंसेप्ट बोल रहा था कि मैथ करना और बोलना पढ़ना उसको नहीं आ रहा था, यहाँ पे बच्चे को बस यही करवाओ, उसका लिटरेसी स्किल बढ़ाओ, बोलने की क्षमता, ताकि वो पढ़ सके, शब्दों को पढ़ सके, सेंटेंसेस फ्रेम कर सके और उसको कैलकुलेशंस आ सके। यहाँ पे उस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज प्रेपरेटरी लेवल। फर्स्ट वन इज नोन एज फाउंडेशन लेवल। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे कहाँ पे आया वो? 6th, 7th and 8th. So the person is going to make entry at 6th. हम 6th क्लास में चढ़े तो क्या होगा? 6th, 7th और 8th में वो जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, जो सब्जेक्ट्स दे रहे हैं। उसके अलावा अगर वो कारपेंट्री सीखना चाहता है, थोड़ा सा कारपेंट्री का कंसेप्ट। अगर वो पेंटिंग सीखना चाहता है तो पेंटिंग का कंसेप्ट। अगर वो कॉबलर का कंसेप्ट सीखना, लेट हिम डू। ठीक है, पेंटर बनना चाहता है तो वैसा कर दो। ठीक है, आप जिस भी कंसेप्ट को आप लोगों को इंटरेस्ट लगता है, यूजुअली क्या होता है, आप देखिए, आप अगर कोई बच्चा है घर पे होता है, छोटा बच्चा भी अगर आपके घर पे आता है, जो मतलब 5th, 6th में होता होगा, तो जैसे बैंडेड उठा लिया, मुझे ना ड्रेसिंग करनी है, नकली उसका इंटरेस्ट है वो, तो लेट हिम डू। ठीक है, अगर वो फर्स्ट एड सीखना चाहता है तो फर्स्ट एड सिखाओ उसको। तो यहाँ पे वोकेशन, दैट इज स्किल के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर। तो स्किल कहीं जाके, अभी पता कहाँ स्किल दी जाती है? करंट स्किल एजुकेशन कहाँ पे हमारी? करंट स्किल एजुकेशन अब तो 9th पे थोड़ा शुरू कर दिया गया, बट यूजुअली 10th होती है, तो ITIs वगैरह में को हम लोग कहते हैं ITIs स्किल, बाकी सब स्किल नहीं है, सिर्फ ITI स्किल है, बाकी कुछ स्किल नहीं है। तो स्किल और वोकेशन, कुछ ट्रेड सिखाया जाए, सीखना चाहता है। आई डोंट नो वेदर हाउ मेनी पीपल ऑफ यू नो, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया है, वहां पे हम लोग को 16 कलाएं सिखाई जाती थी। 64 आर्ट्स वेयर देयर, डिफरेंट आर्ट्स, पेंटिंग, रबरिंग, सिलाई करना। कोई बच्चा सीखना चाहता है सिलाई, तो लेट हिम डू, सिखा दो ना उसको, चाहता है। ठीक है, एंड कुछ बैगलेस डेज का कंसेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, कि एवरी ईयर 15 डेज के लिए कोई बैग नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, लेट हिम गो टू समवेयर, किसी इंटर्नशिप में चला जाए, किसी स्कूल में चला जाए, किसी इंडस्ट्री में चला जाए, किसी गांव में चला जाए, किसी कारपेंटर के साथ बोल तो चले जाओ, या किसी जहां जो मटका बनाता है उसके पास चले जाए, लेट हिम डू दैट थिंग। ठीक है, एंड लर्न द कंसेप्ट, लर्न द आर्ट। ठीक है, दैट वाज द कंसेप्ट एट दिस लेवल, जिसको मिडिल लेवल कहते हैं। सो स्टार्ट वोकेशन एट 6th क्लास। स्किल का इंट्रोडक्शन 6th से शुरू करो, अदरवाइज उसको पता ही नहीं आगे मैंने क्या करना है। फिर वही बात होगी, मैकेनिक के पास जाना है लेकिन इंजीनियर के पास नहीं जाना। ठीक है, देन एज यूजुअल 9th, 10th, 11th, 12th 4 ईयर वैसा ही सिस्टम है। अभी भी सिमिलर सिस्टम, हमें बोर्ड अभी भी देना है, ऐसा बोर्ड नहीं है कि दिया, बोर्ड अभी भी देना है, और थोड़ा सा आसान कर दिया कंसेप्ट को। आसान क्या कर दिया? साल में 2 बार बोर्ड होगा, 2 बार पेपर होगा। मतलब अगर मैं पहली बार में इंप्रूवमेंट नहीं दे पाया तो दूसरे अटेम्प्ट में आई कैन इंप्रूव माई स्कोर। अभी मेरे पास एक ही चांस होता था, एक ही बार जितने नंबर आए वरना गया, तो एटलीस्ट आई हैव डबल कंसेप्ट टू डू दिस थिंग। सो दैट्स व्हाई ये नेक्स्ट 4 ईयर। और अभी मैं जो आपसे बात कर रहा था कि 10th के बाद हम यूजुअली क्या लेते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ये कंसेप्ट नहीं रहेगा। आप एक अकाउंटिंग का सब्जेक्ट उठा लो, एक इकोनॉमिक्स उठा लो, बायोलॉजी उठा लो, इट विल बी अ मिक्स आफ्टर 10th। उसको पढ़ो 9th से पढ़ लो, इट विल बी अ मिक्स। ऐसा कुछ नहीं होगा अब आपको मिलेगा आर्ट्स की डिग्री मिलेगी, कुछ नहीं। यू आर सिंपली 10+2। देयर विल बी नथिंग कि आपने आर्ट्स में किया, कॉमर्स में किया, साइंसेस में किया, किस में किया, कुछ नहीं। सिंपल 10+2 होंगे आप, एंड दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मल्टी-डिसिप्लिनरी डोमेन्स। अलग अलग डिसिप्लिन को पकड़ सकते हैं आप। दिस इज द वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल कंसेप्ट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट दिस लेवल। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑफ डेज की बात बताई आपसे, मदर टंग लैंग्वेज की बात की आप लोगों से। हाँ, यूजुअली जब हम लोग 6th, 7th, 8th में होंगे तो एक एडिशनल लैंग्वेज सीख लीजिए आप। हिंदी सीख लीजिए। अभी तक आप क्या कर रहे थे, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ रहे थे, तो हिंदी सीख लीजिए, इंग्लिश सीख लीजिए। लेकिन जब आप 9th, 10th, 11th, 12th में होंगे तो एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीख लीजिए।
जर्मन, फ्रेंच, एनी अदर थिंग आप सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं, कंपल्सन कहीं नहीं है, किसी भी स्टेज पे कंपल्सन नहीं है, इट्स अप टू यू, आप क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम की बात बताइए, एक क्लास ने बताया हुआ है, जिस इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, देन आई विल मूव। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल आप देखते होंगे कोडिंग वगैरह सिखाते हैं, कोडिंग स्किल्स, कंप्यूटिंग स्किल्स। ठीक है, हम लोग आज भी जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या जैसे मेरे फादर, मैं उनको बोलता हूँ ये फोन है, स्मार्टफोन है, वो कहता है मुझसे नहीं चलता, आप मुझे सिंपली बताओ कहाँ से पिक करने का। होता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स, ठीक है, हमें सिंपल मोबाइल, और अगर जब हम लोग उठाते हैं इतना तो आसान है, इनको नहीं पता लग रहा है। ठीक है, यूजुअली द कंसेप्ट इज दैट इतना तो आसान है, स्मार्टफोन चलाना कितना मुश्किल है। बट ओल्ड एज पेरेंट्स जैसे हम बात करते हैं उनसे, क्या इनसे तो चलता नहीं है, क्यों नहीं आता। अब जो आपसे नेक्स्ट जनरेशन है, जो किड्स, ठीक है, उनको आज से पता है कि यूट्यूब में हम लोग वॉइस कॉलिंग के थ्रू वी कैन इंटरेक्ट, हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज दिस चैट जीपीटी, ठीक है, दे ऑल नो। तो आज फर्स्ट वाले सेकंड वाले बच्चे को चैट जीपीटी पता लग चुका है। ठीक है, जो मुझे आज पता लग रहा है, आपकी ग्रेजुएशन में आपको चैट जीपीटी आके पता लगा होगा। दिस एआई टेक्नोलॉजी, दिस इमर्सिव टेक्नोलॉजी, हमें पता लग रहा है। इन कंसेप्ट्स को हम लोग प्री में इंट्रोड्यूस करा है। इफ समबडी वांट टू लर्न इट, दे कैन लर्न इट फ्रॉम द स्कूल लेवल, वहां से शुरू करें। और एक लास्ट चीज, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर थी, जिसके अंदर करिकुलम रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी इज डूइंग, सीबीएसई इज डूइंग इट। व्हाट इज दैट करिकुलर रिफॉर्म्स? हम सब लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, सोशल साइंसेस पढ़ा है। तो हम लोगों के पास क्या होता था, महात्मा गांधी ने ये आंदोलन किया, फिर क्वेश्चन पेपर में भी आता था महात्मा गांधी ने ये क्रांति की थी, तो बताओ इसके बारे में क्या है, होता था यूजुअली। तो कितने लोगों ने महात्मा गांधी वाला आंसर दिया था, कितने लोगों के पेपर में आया था, 10th के पेपर में महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट, सब लोगों के, मेरे में पेपर में भी आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, बताओ इसके बारे में। दिस कंसेप्ट वाज देयर। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से मुझे क्या लेना देना आज के टाइम पे, मुझे क्या लेना। हाँ, मुझे नॉलेज होना चाहिए, नो डाउट कि नॉलेज आई नीड इट, बट मैं कह रहा हूँ कि आपने सुना होगा गरम दल और नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट हार्ड वाले लोग जो हैं, ठीक है। तो अगर गांधी जी नरम दल में ना होते हुए गरम दल में होते, तो कैसा आउटकम आता, कैसा आउटकम आता। अगर चंद्रशेखर आजाद एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते और नरम दल के पर्सन होते, तो व्हाट वुड बी द आउटकम, उनका रोल कैसा दिखता, उनकी एक्शंस क्या होती। दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन भी बन के आएंगे, ये नहीं लिखा आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन भी ऐसे ही फ्रेम होगा कि अगर ये होता तो क्या होता। तो दैट मीन्स आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, कंसेप्ट है क्या, और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्कूल एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स आए, करिकुलर एस्पेक्ट्स में रिफॉर्म्स जो है। अप टू दिस एनी क्वेश्चन आपके माइंड में प्लीज। आते थे, ठीक है, आप यूजुअली फ्रेमिंग ऐसे ही बनेगी। या प्लीज प्लीज। You told us about like when there was a survey of the teachers in the rural areas where they were asking the question about the plus minus, and they were not telling the accurate answer, right, students. So sir, according to me, like in the foundation level, like before this level, whatever the NEP 2020, so it is my opinion that it was divided into two parts, 10 plus 2. So what was the age? It was for the 10th class, there was the age of 16 to 16 years, sir. Like for example, in the rural areas, for example, if the student is coming in Delhi, right, and maximum, like for example, is taking admission in the 6th standard, but he did not study earlier, like first, second, third, and fourth. He doesn't know. By hook or by crook, with the help of the court, affidavit, he is taking the admission. Now the government has decided, first of all, what the problem is coming, like if we are asking the question from the students, plus minus, not facing the problem. Now, sir, in the national education policy, it has become the mandatory for the students, like first 5 years, they will have to join the Anganwadi or the Balvatika, or the registration is mandatory.
if they are not doing the registration, the academic study needs to. So this is important from the, I think that in the national education policy, this step has been taken by the Ministry of Higher Education. Second thing, sir, in this policy, it is being mentioned, right? If you are, like for example, if you are running by affidavit, it will not answer. So because like in the Anganwadi, your Aadhaar card will be taken, and this Aadhaar card will run from your like foundation stage to the upper post graduation or the research. All these things will run, sir. So according to me, this thing. That means government का रोल जो है, it will start from the age of 3, ठीक है, और आगे कंटिन्यू आपका रोल चलता जाएगा. यूजुअली 10+2 तक तो गवर्नमेंट का रोल चलता है, ठीक है, वहां तक आपका रोल है. सो दिस इज अप टू स्कूल एजुकेशन. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, एनीवन? The vocational education was introduced at 9th level also, but only for 3 years this policy was there. After that it was even they have I used to provide the education to the student, and in certain schools the option was given to the science students that they can choose the option of Mahotsav. That also they have worked for the few years. After that it was, so if you are making the education system so flexible, what is the guarantee that the system again will come back to the old system? Because in that system certain advantages, because that is giving the specialization. If a student has decided at the age of 11 that I need to become a post accountant, chartered accountant, but in the harm is if they are choosing science, social commerce, and if a person wants to become engineer or doctor, he has chosen the science stream. What is the harm in that? He has to choose subjects from commerce and science. I am again saying the same thing. It is the option. If you want to go for science, आप साइंस पढ़िए ना, किसने मना किया है? But ऐसा तो नहीं है, नहीं कंपल्शन है कि that we have to go for sciences only. ठीक है, अभी भी हम लोग क्या लेते हैं? We usually take science, commerce and arts. ये लेते हैं 3 10th के बाद. मैं कह रहा हूँ 10th के बाद कंपल्शन मत बनाओ ना आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स. ये कह रही है. Why we are compelling it? What is our clarity? कि क्या कर रहे हैं हम लोग अपने, मतलब अभी एक चीज बताया मुझे. अभी ग्रेजुएशन का पेपर होता है, कोई भी एग्जाम का अगर आता है, ठीक है, तो वहां पे क्या आता है? आर्ट्स पर आता है, उसमें साइंस का पेपर आता है, मैथ्स का पेपर आता है, कॉमर्स का पेपर आता है. अभी अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं हम लोग, बताओ मुझे आप 10+2 के लेवल पे आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है, सब कुछ होता है, तो फिर ये मतलब प्रेशर क्यों डाला गया कि साइंस ही पढ़ना है, कॉमर्स ही पढ़ना है? दिस प्रेशर वाज देयर. ये कह रहा हूं मैं, एंड इट्स नॉट कि आपको ये ऐसे ही चलना है. उसमें ये बोला गया है कि दैट इट इज अप टू यू, दैट इफ यू वांट टू कंबाइन योर सब्जेक्ट्स, यू वांट टू टेक सम सब्जेक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, आपका इंटरेस्ट है, आपने बायोलॉजी लिया है, साइंसेस लिया है, तो यूजुअली हम लोग, जैसे आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, मैंने केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ी, एडिशनल फॉर मैथ्स, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट थे मेरे, ठीक है, 5वां मेरा इंग्लिश था. एडिशनली आई वांट टू टेक इकोनॉमिक्स, मेरा इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, तो आई कैन टेक इट अप. ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है. अभी क्या है सर, मैं कह रहा हूं कि ये कंसेप्ट था, अगर कोई चाहता है कि मुझे ना स्टोर नहीं लेनी है, मुझे एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चाहिए, एक सब्जेक्ट मुझे अकाउंटिंग का पढ़ना है, और एक सब्जेक्ट मुझे हिस्ट्री का पढ़ना है, तो ये कंपल्शन, ये तो ऐसा तो नहीं था कंसेप्ट पहले, ऐसा कंसेप्ट नहीं था. इफ आई वांट टू गो फॉर दिस एरिया कि मुझे तो पढ़ना है, बट मुझे ना 2-3 डोमेन्स पढ़ने हैं, तो वो डोमेन आपको स्पेसिफिक नहीं बना रहा है, वो डोमेन आपको फ्लेक्सिबल बना रहा है. ये कंसेप्ट है, और कुछ. वो आगे ग्रेजुएशन करेगा या पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तब वो क्या होगा? बता क्या बोल रहे हैं? हायर एजुकेशन पे तो पहुंचे ही नहीं. यस, अभी हायर एजुकेशन पहुंचे ही नहीं सर. हम हायर एजुकेशन पे आने दीजिए, मैं बताऊं सर, लेकिन हमने तो बेस से खराब कर लिया. बेस नहीं खराब, बेस लाइन में है. यही तो हमारा प्रॉब्लम है. हम लोग जो स्टक हो चुके हैं ना कि हमें यही करना है, इससे आगे नहीं जाना. ठीक है, आप वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को पकड़ लीजिए कहीं पर, ठीक है, किसी भी एजुकेशन सिस्टम को, साउथ कोरिया में पकड़ लीजिए. हमारे यहाँ पे कितने स्किल्ड लोग हैं? इंडिया के अंदर 6% लोग. 92% पीपल आर स्किल्ड इन साउथ कोरिया. व्हाई?
क्यों उनको बोला गया है कि नहीं आपने साइंस पकड़ना, आपने कॉमर्स पकड़ना, ये हमारी पेरेंट कह रहा है। उनकी तो एजुकेशन पॉलिसी ऐसी थी जैसे चाइना की पॉलिसी थी, 40 साल पहले भी ऐसी थी। एजुकेशन पॉलिसी चाइना की क्या है? वो बिल्कुल ऐसे ही थे, जैसे हम तो ए फॉर एप्पल ये बताते हैं, वो सिखाते हैं एप्पल को बना के नहीं नहीं सर, नहीं सुनिए मैं बताता हूँ चाइना की एजुकेशन पॉलिसी क्या है। आज भी आप विदेश में जाएंगे तो चाइना के लोगों को जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है आपका रीजन बताता हूं मैं, उसका रीजन भी है, ठीक है। द रीजन इज दैट द कंप्लीट एजुकेशन इज इन चाइनीज, उनको इंग्लिश नहीं पता लगता, ठीक है। हमारा इंडियन सिस्टम में क्या है, हमारा इंडियन सिस्टम में अगर कुछ भी नहीं पता हो, थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो जानता है बंदा, थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो जानता है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे चाहे नीचे या आगे कहीं पे लग जाता है वो। नहीं कंपल्सन मैं कह रहा हूँ सीखने का, लैंग्वेज, ठीक है। फ्रेंच सीख लिया आपने, ये बाकी जगह नहीं है ना। फ्रेंच सीख लिया, जर्मन सीख लिया, जापानीज सीख लिया, ये चीज बाकी जगह नहीं है, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेज नहीं है, नहीं। My concept is that we should not focus primarily on a single specific area. ठीक है, let the student have a flexibility to choose his or her course. ठीक है, उसके डोमेन को चूज करने दीजिए, उसको कहीं कंपेल मत करिए, कंपेल ना करते हुए वो जहां जाना चाहता है उसको जाने दीजिए, ठीक है। दैट इज द बेसिक पर्पस। ये नहीं कि हमने ऐसे करना है तो ऐसे क्यों नहीं करेंगे। मेरे पिताजी ने मुझे बोला था ये पकड़ना है तो मैंने यही पकड़ा है, मैं अपने बच्चों को बोलो ना यही पकड़ना है, ठीक है। लेट हिम और हर डू व्हाई। अगर मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट पकड़ के मैंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट पकड़ लिया तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। लेट मी गो फॉर स्पोर्ट्स, मेरे को कंपल्शन क्यों किया जा रहा है कि मुझे यही पकड़ना है। तो दैट इज द बेसिक पर्पस कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को क्रिएट किया गया है, इसमें कहीं एक कंपल्शन नहीं डाला गया कि आपको करना ही यही है। इसका क्या है कि जब इसके बाद आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, हायर एजुकेशन स्ट्रीम में कोई बीए नहीं होगा, कोई बीएससी नहीं होगी, कोई बीकॉम नहीं होगा, ठीक है। मतलब तो आप कह रहे हो आप ये कह रहे हैं हिस्ट्री का अगर किसी का प्रोफेसर लगना है तो जरूरी नहीं है वो हिस्ट्री की, बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज है इसलिए ये पढ़ा सकता है। मैं म्यूजिक का टीचर लग सकता हूँ, मेरे को थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा नहीं सर, फिर अगर बात गया, ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान नहीं कि मैंने 6 महीने का सर्टिफिकेट कर लिया म्यूजिक में, 1 साल का म्यूजिक का डिप्लोमा कर लिया, अब मैं म्यूजिक का प्रोफेसर हो गया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ सर क्या कंसेप्ट क्या है। चलो इसको थोड़ा बहुत आता इसको बताऊंगा। नहीं, we are not making him directionless, we are giving him options, we are giving him options. Sir, actually, whatever question you are asking, your question is like for example, there is freedom to be a teacher. Like for example, if you have taken one subject economics, another is you have taken the physics. Now you are going to become a professor. Now, because you are the man most intelligent, that's why you can teach both the subjects. So that's one of the criteria under the education policy. Like for example, not a stream. So that is a four subjects that is compulsory related to study from a subject point of view. Similarly, there is a value-added courses you have to take. Like for example, this is not that you are from a commerce background, you have to take the science. This is not like this. If you are from a commerce background, you will have to take like 4 subjects. There is an additional subject which are added in the National Education Policy 2020. So it is not that one subject you will take economics, another you will have to take the physics, another you have to take the biology. So if you are taking all those things, you are nothing. So this is under the Education Policy 2020. Like if you are from the commerce stream is not just this is not the subject. If you are from the commerce stream, there are the 4 subjects you will have to take. Science stream you will have to take. There is a skill-based courses you will go there. Like a sports you may take, right, sir? वो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो अपने सब्जेक्ट का ही पढ़ सकता है, वो साइंस का ही पढ़ सकता है, वो कंप्यूटर और वो उस डिपार्टमेंट में जाएगा वो सीख के आ जाएगा और उसके ना मतलब कोई मार्किंग नहीं है उसकी, अगर कोई नंबर आएंगे या जो भी है वो बस उसको सीखना था। इस प्रकार से
सर सुनिए 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 प्लीज प्लीज जस्ट 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 लेट मी फिनिश, ठीक है। अगेन अगेन सेइंग द सेम थिंग, आप लोग जहां जा रहे हैं, ठीक है, मेरा कंसेप्ट जो है, ठीक है, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग। मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वी आर नॉट प्रेशराइजिंग ए स्टूडेंट, वी आर मेकिंग स्टूडेंट फ्री टू अटेम्प्ट एनीथिंग, ठीक है। कंसर्न क्या है, जैसे इसके बाद हम हायर पे जाते हैं, इसी के बाद जस्ट कैन यू शिफ्ट द नेक्स्ट स्लाइड ना। ओके, नो इशू, जब तक ये शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, हायर एजुकेशन पे जाते हैं। अभी हायर एजुकेशन में आप लोग क्या कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, ठीक है, या बीकॉम कर रहे हैं, या एमबीए कर रहे हैं। अभी हायर एजुकेशन बीकॉम एमबीए की बात नहीं जा रहा हूँ मैं अभी मैं जस्ट सिंपली ग्रेजुएशन पे जा रहा हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन करता था, ठीक है, बेनिफिट क्या है मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। बेनिफिट क्या है, आपका एक क्रेडिट सिस्टम बनेगा, दैट इज नोन एज एबीसी क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो एक मैंडेटरी कंपोनेंट हर यूनिवर्सिटीज के अंदर, हाँ जी सर, समथिंग वाज, ठीक है, तो हर किसी की एक मैंडेटरी आईडी बनाई जा रही है, जहां पे आपकी क्रेडिट्स को एक्यूमुलेट किया जाएगा, एक जगह पे रखा जाएगा, ठीक है। अभी तक क्रेडिट सिस्टम का कंसेप्ट पहुंचे नहीं था, स्कूल लेवल पे नहीं था, ठीक है। अगर आप, अभी मैं एक लेवल बताऊंगा, स्कूल लेवल से क्रेडिट सिस्टम को क्रिएट करना, ठीक है। इतने क्रेडिट्स का आपका फर्स्ट क्लास होगा, इतने क्रेडिट्स की सेकंड क्लास होगी, इतने क्रेडिट्स की थर्ड क्लास होगी, यस, इतने क्रेडिट्स की फोर्थ क्लास होगी, हर लेवल पे क्रेडिट्स है। जब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो इतने क्रेडिट्स बने होने चाहिए, तब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन को माना जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये पढ़ा, 1 महीने पढ़ा, 2 महीने पढ़ा, अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो अब मैं इसमें मास्टर हूँ, ठीक है। देयर इज अ क्रेडिट सिस्टम व्हिच विल बी ड्राफ्टेड, जिसको एबीसी के अंदर आईडी क्रिएट किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जैसे आप लोग ग्रेजुएशन में जाते थे, ठीक है, 10+2 के बाद आपने ग्रेजुएशन जब गए, तो ग्रेजुएशन में यूजुअली ऑल डिग्रीज वेयर, जब जिसने भी बैचलर्स किया है 3 साल की डिग्री, नाउ एवरी डिग्री विल बी ऑफ 4 ईयर। जो ग्रेजुएशन डिग्री होगी वो 4 साल की होगी, ठीक है। 4 साल की डिग्री में क्या बेनिफिट होगा, व्हाट विल बी द बेनिफिट एंड व्हाई वी आर गोइंग टू डू दिस। इनिशियली जब भी मैं ग्रेजुएशन करता था, तो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मान लीजिए मैंने करा, और मेरे पेरेंट की स्थिति नहीं है मुझे पढ़ाने की, ठीक है, इज नॉट कैपेबल और दे आर नॉट कैपेबल। अब मैं क्या करता था, मैं छोड़ फर्स्ट ईयर के बाद आई ड्रॉप, ठीक है। देन समवेयर आई गो, मैं कहीं जॉब कर लेता था, और 3 साल बाद में वापस आना चाहता हूँ, उसमें बोल रखा है कि ग्रेजुएशन चाहिए, कहीं जॉब निकली है जहाँ पे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का चाहिए, ठीक है। इनिशियली ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि जॉब ऐसे निकलती थी जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का कोर्स किया हो, ऐसी कोई जॉब निकली, ठीक है। या हमारी भी ग्रेजुएशन हो कि मैंने 1 साल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं वापस आना चाहूँ तो मुझे एडमिशन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, तो बोला जाता आपकी ग्रेजुएशन होगी, निकलो, आपको फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा। दिस कंसेप्ट इज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस, ठीक, इसमें एक कंसेप्ट लिखा है मैंने, MEME, the concept is multiple entry, multiple exit, ठीक है। Every year you can exit and every year you can entry back, लेकिन ऐसा नहीं कि आज मैंने छोड़ा, ठीक है, आज मैंने सेकंड ईयर किया, फिर मेरा मन करा 15 साल बाद मैंने सेकंड ईयर किया था, अब जरा मैं थर्ड ईयर करता हूँ, ऐसा नहीं। एक गैप रखा गया 7 इयर्स का गैप रखा गया कि 7 साल तक भी आप वापस आ सकते हैं सिस्टम के अंदर, जस्ट टू इंक्रीज दिस जीईआर रेशो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जिसकी मैं पहले बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आप वापस आ सकते हो और आप अपना थर्ड ईयर कंप्लीट कर सकते हो। अब जब फर्स्ट ईयर में पास करता हूँ, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। जब सेकेंड ईयर में पास करता हूँ, आई विल गेट अंडर ग्रेजुएट, एंड जब मैं थर्ड ईयर में पास करता हूँ तो मुझे मिलेगी अंडर ग्रेजुएट डिग्री, इट विल बी डिग्री, ठीक है। अब अगर 3 साल बाद मुझे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, आईएएस या कोई भी एग्जाम हमें देना यूपीएससी का, एलिजिबल, क्योंकि ग्रेजुएशन इज द बेसिक थिंग, वहां पे लेना चाहिए, तो ग्रेजुएशन आपने 3 साल की, यू कैन नाउ व्हाट हैपन, बट आई वांट टू कंटिन्यू माय स्टडी, यू कैन गो फॉर 4th ईयर, व्हाट यू विल गेट, you can get 2 different things, either you can get honors or you can get honors with research, honors or honors with research, ये 2 कंसेप्ट्स आए, ठीक है।
4 ईयर में पहले भी ऑनर्स होता था, बट यहाँ पे एडिशनली अब कर दिया गया ऑनर्स विद रिसर्च। नाउ इसका क्या फायदा है, व्हाई आई शुड गो फॉर 4 ईयर? ठीक है, मुझे नहीं करनी, मुझे 3 साल का ही करना है। दिस इज गोइंग टू गिव मी बेनिफिट फॉर पीजी, इसकी बात कर रहे थे, पीजी में क्या होगा? ठीक है, पीजी में बेनिफिट, माय पीजी विल बी ऑफ 1 ईयर इफ आई विल डू माय अंडर ग्रेजुएशन फॉर 4 ईयर प्रोग्राम। तो मुझे पीजी 1 साल में ही कंप्लीट करनी है, 1 साल की पीजी कर सकता हूँ। इसका ये मतलब नहीं somebody will come after doing 3 year graduation कि पीजी तो 1 साल की है, मैं आ रहा हूँ, नहीं, you have to complete your 2 years if you come after 3 year of graduation। बट अगर आपने 4 ईयर किया है तो आपको 1 साल में ही पीजी करना, 1 साल की पीजी में आप यू कैन डू योर। इसीलिए अब ये कंसेप्ट क्या, कई सारे कंसेप्ट बैक से शुरू कर दिए गए थे, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या इस तरह से। ये इंटीग्रेशन प्रोग्राम जो है, इसको बोला गया कि इनको ज्यादा मोटिवेट किया जाए, इनको रखा जाए। ठीक है, 4 ईयर और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करके पूरे 5 साल के अंदर अपना पीजी तक लेके चले जाए, इसको कंटिन्यू। बट ये है कि दैट इफ समबडी इज डूइंग 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 1 साल में बाहर निकल जाता हूं मैं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मतलब 3 साल के बाद मैं पीजी करने आया 2 ईयर प्रोग्राम में, और 1 साल के बाद मैं निकल गया, स्टिल आई विल गेट पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, अगर मैं कंप्लीट करता हूं तो आई विल गेट माय मास्टर्स। देन पीएचडी एज इट इज 3 ईयर 4 ईयर का प्रोग्राम है, उसको जैसे अपना यूजीसी कह रहा है वैसे ही चलता है। ठीक है, ये एक पैटर्न बनाया गया जिसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का कंसेप्ट लाया गया, जिसमें एक लेवल को क्रिएट किया गया ना। एवरी डिग्री विल बी एसोसिएटेड विद वन लेवल, एक लेवल के साथ एसोसिएटेड की जाएगी। द लेवल विल बिगिन विद लेवल 1 एंड विल एंड एट लेवल 8। आपकी पीएचडी डिग्री जो है वो लेवल 8 की होगी। लेवल 8, ये लेवल 8 क्या है? दिस अलाइनमेंट इज बीइंग मेड इन टर्म्स ऑफ NSQL, दैट इज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जब आप यूजी कर रहे होंगे, उस यूजी में आपको क्या क्या कंपोनेंट दिए गए हैं? कोर्सेज तो करने ही है, जो कंपलसरी कोर्सेज है उनको तो करना ही है, प्लस आपको मैंडेटरी स्किल कोर्सेज करने हैं। ठीक है, आपको मैंडेटरी वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, आपको मैंडेटरी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। तो ये एक बकेट बनाया गया है, कोर कोर्सेज, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, स्किल कोर्सेज एंड एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। इन सभी कोर्सेज में ऐसे सब्जेक्ट्स को पिकअप करके एक सेमेस्टर बनाया जाएगा, ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर ना। अगर कोई चला जाता है फर्स्ट ईयर करके, ठीक है ना, इफ यू वांट टू कम बैक, ऐसा नहीं है कि एकदम से सीधे एंट्री मिल जाएगी सेकंड ईयर में। यू हैव टू गो फॉर 4 क्रेडिट इंटर्नशिप। आपको 4 क्रेडिट की इंटर्नशिप कहीं करनी पड़ेगी, तब आप वापस आ सकते हैं अपने सेकंड ईयर में। तो ऐसा नहीं कि एकदम से कोई भी आना चाहे तो वो भी आ जाएगा। तो देयर इज अ प्रोविजन, जो क्रेडिट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वो प्रोविजन हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर बनाया गया जहां आप लोग पढ़ते। ठीक है, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, ये डिफरेंट बॉडीज, यहाँ तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज लिखी है, ये सभी डिफरेंट बॉडीज है, चाहे यूजीसी एआईसीटी है, ठीक है, अलग अलग बॉडीज है। इन सभी बॉडीज की ना अपना अपना फ्रेमवर्क, सबका अपना फ्रेमवर्क। अभी किस पैटर्न पे चल रहे हैं हम लोग? हमें आईपी, दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड टू आईपी यूनिवर्सिटी एंड एमडी यूनिवर्सिटी। ठीक है, एमडी यूनिवर्सिटी ने जो निकाल लिया वही कर लिया, आईपी ने जो निकाल लिया वही कर लिया। क्यों? हमारा एफिलिएशन यही है। नाउ दिस एफिलिएशन सिस्टम विल गो ऑन, ये एफिलिएशन सिस्टम चला जाए, बट 15 इयर्स के टेन्योर रखा गया है इस एफिलिएशन सिस्टम को। देन एवरी कॉलेज कैन बिकम एन ऑटोनोमस कॉलेज टू अवॉर्ड a degree 15 years from when this policy will be set कि हाँ ओके, ठीक है। बट 2020 में हमने इसको ओके कहा था, लेकिन उसके बाद कोविड पीरियड आया, ठीक है। तो यूजुअली आफ्टर 20 इयर्स से 15 साल के टेन्योर के अंदर धीरे धीरे सारे कॉलेजेस को ऑटोनोमस कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा। अगेन हर कोई कॉलेज को ऑटोनोमस नहीं किया जाएगा, देयर विल बी अ रैंकिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। नैक ग्रेडिंग सिस्टम है या कोई भी ग्रेडिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस ग्रेडिंग सिस्टम की बेसिस पे ही उन कॉलेजेस को ऑटोनोमस कॉलेजेस का स्टेटस दिया जाएगा एंड दे कैन ग्रांट दी। तो ये एफिलिएशन सिस्टम को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, ठीक है, दैट इज देयर। उसके बाद
जैसे इसमें हाँ एक नोशनल आवर का कंसेप्ट है। अभी आप जब पढ़ाते होंगे तो आप लोगों का एक सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक क्रेडिट हम लोग 1 क्रेडिट इज इक्वल टू, सभी टीचर बैठे, हाँ 15 to 15 minutes of what? There are 3 components in the subject: theory, practical, and tutorial. 3 component, theory, tutorial and practical. एक क्रेडिट कितने घंटे का होता है? 14 से 15 घंटे थ्योरी। एक क्रेडिट कितने घंटे का होता है प्रैक्टिकल? 28 to 30 hours। ठीक है, तो यूजुअली 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 15 hours थ्योरी, 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 hours प्रैक्टिकल एंड 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 hours, सॉरी 15 hours tutorial। ये अब कंसेप्ट बनाया गया। अब नोशनल आवर्स का कंसेप्ट क्या है और इस सिस्टम के अंदर क्या दिया गया है कि आप को करिकुलर एक्टिविटीज, असाइनमेंट्स है, क्विज है, एग्जामिनेशन है, ठीक है, इसके कहीं आवर्स नहीं होते, जस्टिफाई नहीं होता। कोई बच्चा कहीं खेलने चला गया, कोई सेमिनार किया आपने, सुबह 8 घंटे बैठे, ठीक है, आप सुबह से यहाँ तक बैठे, इसका कहीं क्रेडिट नहीं है। स्पेशली स्टूडेंट्स ठीक है, सर्टिफिकेट्स पे क्रेडिट में आ रहा है क्या हमारा? पे क्रेडिट में आ रहा है क्या? is it linked with your marks? Is it linked with your marks or is it linked with your study? मतलब किसी सब्जेक्ट में आपको एडिशनल नंबर दिया जाएगा? अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। That is, if it is implemented, that is great। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये चीज है, this system will be there, this system will be there। जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं नोशनल आवर्स का कंसेप्ट, कि अगर आप किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं, वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज है, ठीक है, these activities will come under notional hours। ठीक है, ये नोशनल आवर्स के कंसेप्ट को बनाया जा रहा है और धीरे धीरे हर पर्सन ने अपने सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो नोशनल आवर्स के हिसाब से ही बनाया। I don't know how many of you are making lesson plans while delivering your lectures. If people are making your lesson plans, तो lesson plans में आप notional hour का concept डालना पड़ेगा कि आप 15 घंटे तो है, 1 credit is equal to 15 hours, that's fine, but 15 घंटे का notional hour डालना पड़ेगा, डबल होगा ये। तो ये 15 घंटे जो notional hour है उसमें क्या करा, सेमिनार क्या होगा, कोई ग्रुप डिस्कशन होगा, कोई टूर होगा, कोई विजिट होगा, ठीक है, कोई वर्कशॉप होगा क्या? That will be the part of this। नेक्स्ट अच्छा एक कंसेप्ट और बताओ प्लीज। नेक्स्ट एक कंसेप्ट और इसमें बताऊंगा। आरपीएल पता है आप लोगों को कंसेप्ट? किसी को आरपीएल? आरपीएल जो हायर एजुकेशन के अंदर जो एनईपी ने बड़ा मतलब बड़ा एम्फसाइज किया, आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। मान लीजिए मेरे पास सामने कोई कारपेंटर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, बट वो कारपेंट्री का काम जो है लास्ट 30 साल से कर, 40 साल से कारपेंट्री का काम कर, कैन आई ग्रांट हिम सम सर्टिफिकेशन? ठीक है, तो आरपीएल का कंसेप्ट उस कंसेप्ट के लिए दिया जा रहा है। धीरे धीरे हो सकता है, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक इवेंट हुआ था जहाँ पे ये द्वारिका में ही वो जो बना हुआ है अभी रिसेंटली, दैट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। हाँ नहीं कुछ मंडपम नहीं, भारत मंडपम सीपी वाली साइड, बट द्वारिका में भी कुछ बना था। यस, कन्वेंशन सेंटर इज इन द्वारिका। यस, दैट कन्वेंशन सेंटर में जब इनॉग्रेशन हुआ कन्वेंशन सेंटर का, तो कुछ लोगों को बुलाया गया, फार्मर था उसमें कारपेंटर था, सबको एक अवार्ड दिया, ठीक है, तो वो क्या है? दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। आपकी जो काम किया है उसकी कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेशन, कुछ अवार्डिंग दिया जाएगा, एंड दैट अवार्डिंग विल बी डन by one of the ministry that is known as Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, जिसको NSQ का फ्रेमवर्क जिसने बनाया है, ठीक है। लास्ट चीज जो है, जो यूजीसी है, एआईसीटी है, इन सबको इवेंट करके एक काउंसिल बनाया जाएगा, उस काउंसिल का नाम HECI होगा। इसके 4 पिलर्स होंगे, अलग अलग पिलर्स अलग अलग रोल अपना निभाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट यस, ये एक चीज बता रहा था मैं, ये क्रेडिट्स लिखे हैं मैंने, ठीक है, ये क्रेडिट्स लिखे हैं। क्रेडिट पॉइंट कितने वाले होंगे, क्रेडिट एक साल में कितने क्रेडिट
कितने सेमेस्टर, कितने क्रेडिट का एक सेमेस्टर होगा एक साल? 40 क्रेडिट्स का। सो 40 क्रेडिट्स का 1 ईयर। यूजुअली आई डोंट नो कितने क्रेडिट्स का आप लोग एक ईयर देते हैं, तो 40 क्रेडिट से ज्यादा का हम लोग कोर्स नहीं देंगे अभी। ठीक है, अभी शायद 45 भी है, 50 भी है, 60 भी है, पर एक स्ट्रीमलाइनिंग दिया जाएगा और हर चीज को ना एक लेवल के साथ जोड़ा गया। ये आप देख रहे हैं 0.2, 0.4, 0.8 फर्स्ट, 1.3। ठीक है, ऐसे जोड़ा गया है। जैसे सेकंड आपका 12th पास हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों डॉक्यूमेंट One second. And the mic.
What is running in the mind of the Ministry of Higher Authority? We don't know about this thing. But क्या स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स की तरफ यूनिवर्सिटी है, क्या ये मर्ज हो जाएगी? अगर मेरे पास ऑलरेडी वो सिस्टम मेरे पास में कहीं भी यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, तो क्लस्टर का कंसेप्ट इसीलिए डेवलप किया था। और एक चीज और बताऊंगा इसके अंदर, इनिशियली एजुकेशन के ऊपर तो जीडीपी का मतलब मार्क्स से बढ़ी है, अब मैं उसको 125 कर दूं, ठीक है, तो 125 रुपए सिस्टम को नहीं कर रहा है, तो अभी आई डोंट नो आपको कितनी होगा, तो ये सेमिनार क्यों किया, ठीक है, तो ये तो मैंने तो Very strong which we achieve in the future. Because, like for example, I am in MBA Institute. I want to take the autonomous status from the group OBC University. So I will take. And कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जो भी कोई कॉलेज उन कॉलेजेस की रेटिंग देखी जाए उसकी बेस पर उनको ऑटोनोमस किया, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, मुझे कहीं से एप्लीकेशन मिली, हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी भी अप्रॉक्सीमेटली 70 because there were so many institutes there. And what is the difference? Query from the audience.
हमारा पहले डिप्लोमा हम लोग इसको चलाना नहीं चाह रहे और कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्ट में इसमें हमारे लोग भी अंदर थे, काफी लोग भी थे, जब ये पॉलिसी बना तो हमारे पास भी सजेशन किया फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 months to all बट रियली क्या मैं इसको पढ़ के मैं आपने डिलीवर किया। आई होप मैं कुछ जस्टिफाई कर पाया हूँ जितना मुझे पता है। Thank you so much, sir. There has been a lot of said and done about NEP. Not done, we have not done and dusted yet, but there's a lot of things which have been said about NEP. But I have been, being a faculty, we have been attending a lot of workshops, seminars on NEP. And today's session was very enlightening, sir. And making us understand the importance and benefits of NEP when we talk about we're talking about nationalism and sovereignty through education system. We're talking about accessibility, equity, skill development, upskilling, utilizing the young population. And not only this, we've very beautifully transitioned from the 10+2 model to 5+3+3+2, wherein we are talking about creativity, then introducing examination patterns strategically, not just imposing exams on students that they're just cramming and writing now. They're learning through exams. And then carefully introducing vocational studies and then improving their skills. And in the end, we are talking about multidisciplinary domains, not just restricting to arts or humanities or science or commerce, just because the grades were such. Thank you so much, sir. And thank you for letting us know that NEP 2020 is a policy. And there are a number of policies which are being made, but this is a policy which will bring empowerment to our students, and there will be flexibility with the students. And we as a faculty members, we have an instrumental role to play to make this policy very successful. Thank you once again. With this, I move to the memento presentation. I would request Honorable Dr. 𝐶𝐬𝐲𝐬 ma'am to present a memento to Dr. Dalip Raina sir as a token of respect and reverence. Thank you so much, sir.
After this, we will be proceeding towards the valedictory ceremony. I request the organizers to submit a message in the family group that all the faculty members need to be present in the seminar. Before we proceed for the valedictory session, I would like to invite Honorable Dr. Rakesh Khurana sir, advisor MERI, to summarize the day two of the national seminar. Over to you, sir. Most interesting was H.D. Agarwal, president of this society, um, giving his experiences, starting with Academician, which was the first education policy, 56, to when Mr. Narasimha Rao was the HRD minister and Mr. Rajiv Gandhi was the Prime Minister, 1986, the second one, and current one, the NEP 2020. So NEP was formed earlier than that. It's kind of a second branded version of NEP. Discussion started when Mr. Modi came into power. So Mr. Sharma briefly painted the picture since then. Then Mr. Rakesh Yadav, in a practical sense, being head of a department in a private university, said how things are now available varying. 3 years degree, 4 years degree, 5 years degree, 5+3 system. Then, of course, inducting syllabus related to nationalism into the regular syllabus. Now, this is where the dichotomy is actually. India is, I think, the only country, and of that size, to have a national education. Countries don't even have a national industrial policy. I don't see any democratic country or even an ex-communist country having a nationwide education policy. Why? The task is very, very different. You know what the people in South India or even Western India think, or Northeast India think, is different from people, not even in Northern India, some states. Be that as it may, this is an attempt, some people think it is a political attempt. And then talk about that the allocations will improve, which they have not. As a percentage of GDP, they are standing near 2.8 or something. And target of 6% is not appropriate. Some people don't realize that basically the primary and secondary education are under the state government and even districts. To consider the primary education, the education department. So this national education policy is basically higher education. Same thing which we heard, I participated in the 1986 one. We were younger, had a lot of gusto, we changed things and all that. And Prime Minister was there, who was
always there to listen to your bright ideas. But very soon, the shock absorber of the university system, quote unquote, I would say, he's not quoting somebody else, kills that enthusiasm. What survives? Only thing survives is that people who are in the bureaucratic professions or government jobs or upper end professionals end up having, instead of 1 IIM, 4 IIMs, and 16 IIMs, and 20 IIMs. 1 IIT and then 4 IIT, 16 IIT. Why? Because it is the most highly subsidized education in the world. In the world. Top class faculty, top class infrastructure, and you pay peanuts for it, and after that, earn so many dollars with it. And that is the concentration of those people. Anyways, now coming to the syllabi, therefore, UGC has to admit, because which degrees are the proper degrees is defined by the UGC. Four-year joint degree is there, UGC has to define that. Otherwise, it's not a recognized degree. The faculty, therefore, have a hesitation. Faculty normally does not like change. Does not like change. Why? Because they may have to do a whole lot of work extra to adjust to a new system. And we will see how these 4-year MBAs and 4-year honors degree in the BCA and BBA will work. So then the university has to agree. University agree means the academic council has to agree. And then the board has to agree. It takes years. By that time, the enthusiasm goes down. The only question they always have is UGC going to give us more money? If UGC is going to give more money, good chance it will be accepted. If they're not giving more money, forget it. Academic councils will keep on postponing the discussion on that. Okay, now coming to this, Swati has said all the positive things about the NEP. I have told you I was fantastically enthusiastic for the 1986 policy and saw how over 20 years, 30 years, after it expired, I think it was 96, maybe 2000. So after 20 years of discussion, we have. Now imagine, situations have changed. The push which they wanted to make, they have achieved, which is for the higher education, more of the burden should be taken by private sector. And what is the meaning of more of the burden to be taken by private sector? That tuition should be paid by students of their parents. That's what it means, actually. And more, because profits have to be made. Properties have to be made. Buildings have to be made. Lands have to be made. So this is that gradual shift, at least in terms of the additional ratio. Now, what do we talk about the gross enrollment ratios again and again? And being one of the lowest in the world, we are the most highly educated people in the world. If you look at the robotics engineers and AI people and so on, maximum number also. But we don't have people who want to primary. Where is the dichotomy there? The dichotomy is there that the state governments don't have the money. And therefore, they cannot expand primary education, secondary education. As individuals, how does it matter? It matters that maximum money is obtained by some universities, like the university, and the IITs and the IIMs. They do have a global standing, but the rest remains far less. They don't appear in the top 100 either, except for a handful of these universities. But last line I'll summarize it, which I did yesterday also. Take it as an enabling policy framework, right?
This policy enables you to do a lot of things, which in the other countries anyway they are able to do, but we had control over the education. Right? Now that control is relaxed. And the universities can do more, private universities can also do more, devise their own syllabi, devise new combinations of syllabi. This has already become talk of the town, that you can do medical studies without doing biology, right? Or you can become engineer without doing physics. It's an excellent way of saying it. So, personally, I find that both the 1986 policy and this one actually gave far more degrees of freedom to education. Okay. But what gets picked up in the country, in our country, are the policies really ever seriously discussed? Including industry policy, including import policy, and therefore you change the price of various products. No, they will catch on something that in one syllabus of NCERT, 𝐿𝐭𝐻𝐭𝐻𝐿 photo and log out drum on that. Some issues like that which are no different. I mean, personally, I would say whether you put Prophet Muhammad's picture, which you are not, or you put one religious figure or the other religious figure, one branch of Christianity or the other one, different things. All of them talk peace in the end. All of them talk brotherhood in the end. But no, they become a matter of hot political issue. So all my advice is, and I have found that to be accepted in the professional institution, that the students and the faculty should not waste their time. That's stuff. That is a matter of politics. That can be done. If a policy is now permitting us to devise a 4-year honors degree of BCA, we should say how best. Whether they'll get BTech, yes, after 1 year they can get BTech also, good enough, even if not. But now the degree of freedom is there. I can design a BBA plus MBA in 4 years program. Can I do it? We'll save 1 year. Costs go down. Faculty can get more salary. And in any case, it's more efficient. Because if it is a good BBA, you have covered half of the syllabus of MBA anyway, right? And so my period time is over. So I would like to thank you all for listening to me. Kind of extempore, but we have participated in this over a period of time. And see that in the end, it's where the pocketbook is there. But again, I repeat that the degrees of freedom are more. And it's more difficult to handle more degrees. Thank you very much. Thank you so much, sir. It is always a delight listening to you. And thank you for being our saving grace. With this, we move towards the valedictory session. May I now request Honorable Dr. Rakesh Khurana sir, Advisor MERI, and Honorable Dr. Deepshika Kalra ma'am, Dean MERI, to please come forward and distribute the certificates for all the participants. Yeah, given the message, ma'am. So we start with Honorable Dr. Deepshika Kalra ma'am, Dean MERI. I request Rakesh sir to give away the certificate.
Thank you, ma'am. Honorable Dr. Gurpreet Kaur Chhabra, ma'am, Associate Professor and Program Coordinator, MBA. Honorable Dr. Priyanka Maurya, ma'am, Associate Professor and Program Coordinator, BBA. Dr. Monica Sharma, ma'am, Assistant Professor, MERI. Honorable CMA Ajay Jain, sir, Assistant Professor and Program Coordinator, BCom Honors. Next, we have with us Ms. Stuti Narula Merkant, ma'am, Assistant Professor and Program Coordinator, MERIL, PLI. Next, we have with us Dr. Swati Chawla. Dr. Neha Shivani, ma'am. Mr. Ishwar Singh. Dr. Indu Sharma, ma'am. Dr. Simranjeet Bagga, ma'am. Ms. Sarita Yadav, ma'am. Dr. Sangeeta, ma'am. Ms. Nisha Garg. Mr. Anuj Kumar. Ms. Ritu Sivani, ma'am.
Dr. Lalita Yadav, ma'am. Yes, obedient students. Dr. Shweta Ashwini, ma'am. Mr. Salman Hussain, sir. Dr. Pooja Singh Negi, ma'am. Mr. Manoj Bansal, sir. Mr. Gaurav Pateja. Mr. Dushyant, sir. Mr. Pradeep, sir. Mr. Deepak Anand, sir. Dr. Amit Kumar, sir. Dr. Dhanbir Singh, sir. Mr. Mohit Kumar Yadav, sir. Mr. Kapil Dev, sir. Dr. Sapna Sharma, ma'am. Mr. Jay, sir. Rajni Rani, ma'am. Thank you very much, sir. Thank you very much, everyone. Thank you so much, sir. Before we end the today's seminar, I would like to take the opportunity to propose the vote of thanks for 2 days national seminar in sponsorship with ICSSR on empowering the future, celebrating Azadi Ka Mahotsav through NEP 2020. To begin with, I would like to express my heartfelt thanks to Honorable Shri I.P. Agarwal, sir, Chairman, Mary Group of Institutions. Thank you so much, sir, for accepting our invitation and gracing this seminar with your benign presence. Your blessings are always immense for us, and we
uh, we always want you to be with us to support us. Moving on, I would also like to thank Honorable Dr. Lalit Agarwal, sir, Vice President, Mary Group of Institutions, truly said a mentor by our side, very innovative and inspiring us to do something new in the field of education. Next, I would like to express my gratitude to Shri S.K. Agarwal, sir, CFO MERI, always helping us with the right numbers. I would also express my gratitude to Dr. Rakesh Khurana, sir, advisor MERI. Thank you so much, sir, for bringing in us new light and always guiding us and inspiring us. I would also like to thank Dr. Tapash Dey, sir, head HR MERI, for being the right strategist. I would like to express my gratitude to Honorable Dr. Deepshika Kalra, ma'am, Dean MERI, for always believing in us. Thank you to Dr. Nutan Bharti, ma'am, HOD BA Thank you for always giving your versatility and dynamism to make our event successful. I would like to express my gratitude to all the program coordinators, course coordinators, and class coordinators, and the faculty members. Your commitment and your unwavering support has always helped us to make this event successful. I would also express my gratitude to Ms. Sarita Yadav and Mr. Salman Hussain. They have put in a lot of efforts from last so many days and making this event a huge success. Thank you to the anchoring team, I along with Stuti Markar Narula ma'am. Thank you for crafting flawless presentations and thank you for bearing with me when I was not present for the seminar. Thank you to Dr. Sangeeta ma'am for always making flawless presentations, crafting flawless presentations and synchronizing with the anchoring team. I would like to thank Mr. Pawan Kishore Jha and Ashok sir and also Mansi for handling the technical desk and running the presentations seamlessly. And Sumit sir. I'm going by the order of the duty chart. Then I would like to thank Ms. Simi Madan and Dr. Indu Sharma ma'am for being very meticulous for the arrangements, creating a conducive environment. Your attention to detail and hard work has greatly contributed to the success of this event. I would also express my deep gratitude to Dr. Sumit Chauhan sir and Ms. Shweta Ahuja ma'am for their warm and efficient services and ensuring guests comfort and delicacies with delicious meals. Thank you to Mr. Ishwar Singh sir for heading the escorting team and creating a dedicated and professional environment and making the being a seamless guide for all speakers with us. Then I would also like to express my gratitude to to Mr. Naresh and team for photography and videography for capturing the essence of seminar with skills and creativity. I would like to thank the digital marketing team, Ms. Shikha Garg, Ms. Surbi Yadav, Vipin Yadav sir, Rogender Yadav sir for designing creatives and enhancing the visibility of the event and making the event live. I would also like to thank Dr. Neha Shivani and Priyanka Maurya ma'am for writing a comprehensive documentation as a report. I would extend my gratitude to Ms. Elena Messi ma'am, Mr. Rishi Pal sir for the maintenance and cleanliness of the seminar hall and the vicinity. I would fail in the duty of my anchor if I forget to thank all the esteemed speakers whose valuable insights have illuminated the path towards a more empowered and inclusive education system. I would like to thank our guest of honor, Dr. Durgesh Chapati, sir, Associate Professor, GGSIPU. I would like to thank Mr. Rajiv Kumar, sir, Deputy Director General and Chief Producer, News and Current Affair, Doordarshan. Professor Rakesh Kumar Yadav, sir, IFTM University, Muradabad. Professor Dr. Rachna Chaturvedi, ma'am, Rabindranath Tagore University, Bhopal. Dr. Dalip Raina, sir, Assistant Professor, Sri Vishwakarma Skill University, Haryana. Thank you, everyone. With this, we come to an end of the two-day national seminar. I extend heartfelt gratitude to all the participants and, of course, my lovely students for being part of this seminar and contributing towards the enlightenment of the seminar. Your insights and discussions have undoubtedly paved the way for more profound understanding of national education policy and its transformative potential. As we leave this forum, let us carry forward the spirit of collaboration and commitment
to shaping a future marked by inclusive development, holistic education, and continued progress. Thank you for being catalysts for change. May our collective efforts propel India towards greater heights in the years to come. I wish you a very good afternoon, and we wish to come together again for this continued journey in the pursuit of education excellence. Thank you so much. And lastly, thank you on behalf of the anchoring team, I along with Stuti ma'am. We are greatly thankful to Dean ma'am for always believing in us and allowing us to host the event. Thank you so much. कॉलेज आज ही मैंने रिकॉर्डिंग
इन्होंने बगैर बात के लगा के नहीं हुई अभी इन्होंने बात के लगा के कहाँ गए? और क्या कोई शॉर्ट में Recording stopped.